Number 61, are you there? Roll number 61. Shamika Atre. Okay. Our guest has joined. Kote sir, are you there, Kote sir? Yes, ma'am. Yes. Yeah, I have joined. So it's going to start at 11, it seems. Yes, sir. Before that, I will give your introduction. Yeah, sure. Thank Good morning, everyone. It is my absolute honor to introduce our distinguished guest speaker today, Professor Shatrunjay Kote, a highly accomplished academic researcher and sports professional. Dr. Kote is a professor at MSM's College of Physical Education with an extensive educational background that includes multiple degrees in physical education, psychology, and English literature, along with a PhD in anatomy, physiology, and exercise science. He has dedicated his life to advancing physical education and sports sciences. Dr. Kote has a remarkable track record in gymnastics and martial arts, having participated in 12 national gymnastics events and 7 national martial arts championships, including earning gold medals at the international level. His contributions as a coach have shaped many athletes, having served as a gymnastics coach for the government of Maharashtra and Andhra Pradesh. In the academic realm, Dr. Kote has made significant contributions with numerous research publications, including 13 research students awarded PhD under his guidance and 15 books published on subjects like physical education, sports science, and martial arts. His scholarly work has been recognized with various research grants and awards. Beyond academics and sports, he has played a key role in shaping policies with curriculum as a member of multiple educational boards and committees, including those of Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Mumbai University, and Savitribai Phule Pune University. With his vast experience in education, research, sports, Dr. Kote is a true inspiration to both aspiring athletes and academicians alike. It is a privilege to have him with us today and to share his knowledge and insights. Over to you, Kote sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Good morning, everyone. I would like to share my PowerPoint presentation. Will it be possible from here? Can I Yes, sir, you can access share. from my, yeah, thank you. Yes, sir. Yeah. Is it visible? Yes, sir. Yeah. Okay, fine. Is it visible, ma'am? Yeah, okay. So today, as I am from the background of physical education, let me establish my field for yourself. You're all from maybe from other different faculties because you are doing your orientation course. So I'll be establishing the relationship of overall health, well-being, and holistic development through physical education. So before starting, let me have something to share with you. I want to share a small story, okay, that may inspire everybody. So we all are sitting here for a change, right? Everybody is looking for a change. What I have got yesterday, I wanted to change today and so on. Fine. So change is very important. Regarding change, I would like to share a story of a bird. You might be knowing eagle. Yeah, it's a species. It is related to falcon, hawk, condor, and this high-flying bird. And it's of massive hugeness, which has got its wingspan around 3 meters, around approximately 10 feet of wingspan. And it can carry a goat even while flying. So it's huge bird species. It's called golden eagle. So it has got around 70 years of life. Fine. So
in 70 years of life, what it will do is, see, in 70 years, it will be doing? It has got distinguished characteristics. Is it visible? Am I visible? Yeah, right. So in 70 years of life, at the age of 40, what happens is the beak of the eagle gets blunt. The talons with which it hunts gets blunt and they are weak enough not to hunt. And even the wings of the chest and the feathers at the chest, they are so heavy that it will not allow it to fly very easily. So what it takes a, what you call, we say it sadhana, sadhana, disciplined life sadhana, for aiming for something very precisely. So it does a sadhana. What it does is at its 40, it will be unable to what you call hunt the species for its prey. So it sits at a level which is more higher where it cannot be hunted. The bird is hunted by other animals. Okay, it's a vicious life circle. So it looks to it that it cannot be hunted and it sits at a very high peak. First of all, what it does, it breaks its beak by hitting on a hard rock. Okay, now the beak has got a tendency that as our nails had got a tendency, if we cut also the nails grow. Similarly, the beak has got a tendency, it's a protein which has got a tendency, it can grow. Fine. So after breaking the beak, it will take 40 to 50 days to grow again. So till 40 to 50 days, it's not going to have anything. It is on fast. Okay. It's just fantastic to know that a bird is fasting for 50 days just to live for another 30 years with pride and pleasure. Fine. So what happens? It breaks its beak. And once the new beak grows, it has got enough strength as it used to be in its young age. Fine. Now what happens? It plucks the talons. It plucks the talon with the help of the beak, and the talon again it grows on its own and it again takes 50 days. So now it has gone 100 days of fasting. Can you imagine 100 days of fasting for a bird? Even human beings cannot do that. But see, for a change, what it is doing, the dedication. Now, after growing the talents and the beak to its what you call to its complete strength, it plucks its feathers from with the beaks and the talons. And to grow the feathers again with the same potential, it takes again 50 days. So overall, it is fasting 150 days. That counts to around 5 months. Can you imagine a bird fasting for 5 months without having food to just live for another 30 years? And it is after that it takes a good fly. After 150 days, it takes a good fly as it used to take in its young age. Then it again stays for 30 long years. So if a bird can choose for a change, for a what do you call change, for a good life in the change, so why not we? So we are all here. What I mean to say is just for a big change, we are aiming for a big change. So I would like to, I was very impressed with this and I thought that of sharing with you all. So I think why change is needed. Okay. Now, many times in order to have change, we have to start new process. So we need to change. We sometimes need to get rid of old memories, habits, and other past traditions, and hence we can grow on our own. Only freedom from the past burdens can we take advantage of the present. If we can unburden the past, we can take advantage of the present. So change is needed. Again, sharing with you all a very fantastic, what you call, and thinking of the Japanese thinking regarding time, the importance of the moment. The moment, what we are now doing. So, what the Japanese say is that the pathetic died yesterday, wanted to live another day. You fortunate lived the day, think what you have done yesterday.
See, it's just fantastic. What I mean to say, I want to share this one. Somebody's mic is on. Yes. Am I audible? Am I audible, ma'am? Excuse me, Yes, sir. sir. Rupali, somebody's mic is on. Yeah. सर बाइलैंग्वेज समझाइए सर थोड़ा बाइलैंग्वेज 62. Yeah, thank you. Thank you very much. So, shall I share? Is it okay? Yes, sir. Yeah, ma'am. So I wanted to share this quote, what the Japanese think about the time. They say that the Patrick who wanted to live a day has died yesterday. Okay. We are very fortunate that we live the day and think what we did yesterday. So this is just fantastic quote. I would like to share us to what you call a small incidents. One of our team from Aurangabad visited Japan for management of the debris. And so what happened is when they went there, they called the team to get ready by 8 o'clock in the morning to visit Japan for just looking how they manage the debris. So our team was somebody is hello, roll number 21. Can you switch off the mic, please? Roll number 21. Dr. Chand Basha. Yeah, thank you very much, sir. So what happened is they went to Japan for knowing about the management of the debris. They told them to get ready by 8 o'clock in the morning. So they will pick up from the hotel and they will show the management of the debris in Japan. Our people, as usual, we say Indian Standard Time. They came from their room for the breakfast at 8 o'clock. And as they told to get ready by 8 o'clock, we will be departing by 8 o'clock. So after breakfast and all this thing, it took around 45 minutes. The Japanese who were there, they told them very strictly that in Japan, when we say 8 o'clock, it is not 8:00, it is 7:55. So be sure, make sure that 5 minutes earlier you get ready. So otherwise, tomorrow will not be picking you up. They were very strict about the time. And as I know, the most late train in Japan till today recorded was 18 minutes late. Can you imagine? 18 minutes late till today. The recorded late time of the Japanese is 18 minutes. Can you imagine the importance of time? Every day I think every what you call visit or every tour we face such that half an hour the train is late or 1 hour the train is late, but the recorded time late was just 18 minutes. Can you imagine the importance of time? So I think time is not money. People say that time is money can be reimbursed, but time cannot be reimbursed. So value the time, and I think the moment can be enjoyed, the moment can be flourish, the movement can be potentially enhanced. Okay. Now, a very basic question I think that everybody till today has got into their mind that what is life? Okay. Somebody are able to define their life, but somebody are in chaos. What is life? So as a profession from sports and this thing, somebody has said, and I took it from the to my advantage, that it's a game of chance and choice. Do you agree with me? It's a game of chance and choice. Life is game of chance and choice. So the chance is that where we are born, to whom we are born, what language do we speak, where, in which state we are born or in which country we are born is a part of chance. So that is over. We don't have any now chance to change that chance, right? So we have got just choice to opt. So what choice we are doing, that is very important, and choice makes everything in your life. Choice make abundance in your life. What I have experienced, I think chance is already done, so we don't have to regret upon the chance. So whatever the chance was there, we had it. Now we have the time to change and we have the choice to do. Now we'll be going into that very deeply. Just part of philosophy, part of philosophy. Human being is
living, the journey begins in the womb till the tomb, right? Do you agree with me? So during this period, we have only choice to make. Choices are there to make. So I'll be dealing with three important aspects in physical education regarding the chance and choice. Now, first, let me clarify what chances you have, what the existence, what the entity, what the nature, what the parents has given. Oh, let us say what the Almighty has given to us. Somebody doesn't believe in Almighty. So I'm saying that existence, nature. So I'm calling it existence and nature. Somebody might be atheist. They will not be believing in God. So I said existence. So first part of my lecture is regarding the chance. Let us see how you are made up of. We every time complain that we are poor in this, we are poor in that. Somebody is poor in what you call monetary things. Somebody is poor in they are just having 2 flats. They don't have 5 flats. Okay, they are poor like that. Okay, so we'll always be crying. Let us see what the existence has given. And after completing this, no, I'll be asking you the rate. Okay, rate of everything what the existence has given. Till today, I cannot find the rate. If you, the elegant persons, can give me the rate, I'll be more obliged and more what you call respectfully bow in front of you. Okay, let us see what is there. So as I said, we always cry, so I want to ask you, are you rich or poor? So I'll be describing something mathematics of physiology. Okay, something different. A paper was presented by me in some conference regarding mathematics of physiology. Now I'll let you know what is mathematics of physiology. It is just interesting because everybody is content with that. So I am dealing with every faculty. Okay, fine. So I have opted this for your means orientation course because you are from different faculties and you might not be liking physical education. But I think everybody has got something which is in common. That common I'll be what you call describing with you. Fine. So it's just an amazing body. Let us see what you have got. Okay. You have got 30 trillion cells. Let me elaborate it. It is around 60 million. If I write in mathematics, no, it will be 6 into 10 raised to 15. That is 6 carried by 15 zeros. The cells which are made in your body are around 200 different types of cells. 200 different types of cells and around 6 into 10 raised to 15 cells. That is 60 million cells. Okay. This is just one fantastic thing. The second fantastic thing is every minute 300 million cells die. That is around 30 crore cells die. And in every minute they come up with the new life. Okay. Is there any factory in the world? Can you tell me, is there any factory in the world which makes, let us consider an Alpine factory. Okay, Alpine, you know Alpine, which we put to the paper, Alpine factory. Do you know that how many Alpines are made in a minute? Our body makes, say, 30 crores, that is 300 million cells in a minute. And for the lifetime, the cell count remains the same. For the lifetime, the cell count. So we have got a factory which is producing 300 million units, whatever it may be, maybe the cells, whatever it may be. So the factory is so efficient that every minute 300 million cells are being born newly. And for the whole lifetime, the cell count remains the same. Okay. Now, next, let us see what is there. If you open up a cell, the DNA stretches to 2 meters. In one cell, the DNA stretches to 2 meters. That is how it is coiled. Okay. If you open all the DNAs and you attach the DNAs, you know what is the length? It is 10 billion miles. Into, if you want to convert it into kilometers, we are what you call acquainted with kilometers. So if you want to convert it into 1.6, you can do. Okay, 10 billion miles. So it is the distance from Earth to Plato and back. You know the planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Plato. Today, they are saying that Plato is not in the solar system, so whatever it may be. But what we have studied in our early days in our schooling, that Plato was a planet, right? So
you can travel to plateau and come back again. That is 10 billion miles. Okay. If you stretch the, what you call the DNA in every cell, that is 30 trillion cells, it will be around 10 billion miles. Okay. So we are very poor, right? We have got so less quantity of cells, so less quantity of stretchability in the cells of about DNA. So the next interesting thing is brain. Okay, you have got brain. Everybody has got brain. This is just weighing 250 grams. How much? Just 200. Pav kilo. Pav kilo hai. Kitna hai? Pav kilo. Hindi might people from Hindi might be knowing what is pav kilo. That is 250 grams. So every day the impulses passes in the brain in the neurons. No, it can light a bulb of 20 watts for the whole day. Can you imagine? It can light a bulb of 20 watts for the whole day. It has got so much of electrical impulses. Okay. The second most interesting thing is what the brain, 1% of brain thinks in 1 second requires how much? 82,000 processors for they should be running for 40 minutes. Only then they can think of what the brain is thinking, what the 1% of brain is thinking in 1 second. Can you imagine this fantastic thing? See, this is just a highly what you call prepared computer, what I think so. You know, the hard disk of your brain, it can store all the books till today which was published in the book in the world can be stored in one brain. Can you imagine this? The hard disk. It is just fantabulous. Okay, it's just miraculous. Okay, as we know that we are said that Einstein has used his 7% of brain. If Einstein, the millennium scientist, has used 7%, you can think of me and you how much we are using the brain. Okay, he was the millennium scientist who propounded the theory of relativity. When I heard that when he expressed his theory of relativity in the world, only 9 scientists could able to catch that what he wanted to tell. So this is just fantastic thing what I wanted to share. So again, we are very poor. Our brain is very poor, isn't it? Okay. Next, let us see related to brain. I'll be giving some test to you. Okay. These are very interesting tests. Everybody can do at home without a consultation of your coach or anything. You can do this. So I'll be sharing this. You just take the note if you want. What you need to do is you have to stand on a single leg. Okay. You have to stretch your arms sideways. I'll be showing you the photo. 1 minute. I think I missed the photo. Okay. You have to stretch the arms sideways. You have to stand on 1 foot. You have to hold a stopwatch in one hand and you click. And what you need to do is you have to close your eyes. Okay. Now, as soon as you close your eyes, you lose your orientation. And if you, after closing your eyes, if you can balance for 51 seconds and more on single leg, if you are 30 years of age, 40 years, many might be of around 30 years, 40 years, I don't know. Let us say all are young by age, but still, let us consider if you can balance on one leg for 51 seconds or more, your brain is, or to balance yourself or control yourself, is of 20 years young boy or girl, whatever it may be, because at the age of 20, everything is flourished. Everything is at its peak. Okay, every organ is at its peak. So brain will be at its peak at the age of 20. So you need to hold. If you can hold the time for 41 to 50 seconds, think that your brain has gone old of 30 years, right? If that is from 31 to 40 seconds, think though you are 30 years of age, your brain has gone 40 years of old, 40 years old. Fine. If it is between 25 to 30 seconds, though you are 40 years of age, your brain is of 50 years. Okay, fine. Now, if it is less than 25 years of age, you have grown old with your brain. Okay, fine. This is just a simple test you can do. Anybody can do. Just make sure that you have a stopwatch with you so you can count the time. But the thing is that you need to close your eyes, stand on single leg like a stork. Stork, you know, stork, which will be hunting fish sitting in a pond and water. It may be on a single leg. Similarly, you have to do it. It's a stork stand test. Okay, now let us consider your skin. Though you lie, no, your skin will never lie.
So the lie detectors catch your skin, what you call moisture, skin temperature differences, and it will catch you whether you're lying or you're saying it truth. Fine. So skin will never lie. You will lie, but your skin will never lie. That is the fantastic thing with the Excuse me, skin. sir. And it weighs around 9 pounds in Excuse me, weight. sir. If, excuse me, roll number 32. Can you switch off your mic, please? Yes, no, sir. I want to ask one question. Sorry for Yeah, we'll be having question and answer sessions lastly. Oh, Okay, fine. I'll okay, give sir. time, sir. I will give time. Okay, fine, sir. Thank you very much. We'll be having question answer session also. I'll be clarifying your doubt to my knowledgeable extent. So if you take out your skin, you know, with a single bed is how much? We have double bed, we have single bed. Single bed is of 6 by 3. Okay. That counts to around 18 square feet. So you can put a bed sheet on that with our skin. That much skin we have. One bed sheet, one single bed sheet, you can pour, that is 1.7 square meters. It is around 18 square feet. Okay. So what I mean to say again, skin, it has got a value. Okay, fine. Though we purchase the bags, the shoes, the belts of other animal skin, we don't give our skin for anything else. So our skin is just useless. Fine. That I want to tell you. Okay, now a second test for you all. A small test. You know what you have to do? You have to pinch your what you call near the waist with your fingers. Okay, this way, and you have to catch the fat. Okay, now you measure the fingers on the scale. If it is 1 inch, okay, you need to do little exercises. See, try to understand what I'm telling. You need to do little exercises to shed down the fat. If you found that your measurement of the fat is 1.25 inch, the 0.25 inch above 1 inch will tell you that you are carrying 10 pounds of excess fat on your body. Are you getting me? I said 10 pounds of excess fat just with an what you call the increase in length by 0.25 inches. If it is 1.5 inches, then think that 20 pounds of more fat you are carrying with you. So this is a simple test you can check for your fat. I'll be giving you some tests which can be done anywhere, but these are very interesting. See what I told related to the brain. If you want to do the balance test, it shows your brain control on your body. The second test is regarding fat. You can check the fat. Now, this is just fantastic thing. You have got eyes. Everybody has got the smartphones, okay? So we boost about the smartphones that my smartphone is having 80 what you call megapixels of camera, 40 megapixels of camera. You know what the eye has got? Your eye? It has got 576 megapixels. Can you imagine this? It can differentiate 1024 into 1024 types of shades. 1024 into 1024, you can do it. So it can differentiate this much shades, and the resolution of the eye is 576 megapixels. The day, in the whole day, you will be, say, you will be sleeping for 8 hours. Remaining 16 hours, you will be awake. During that 16 hours, half an hour, you will be blinking your eyes. Okay. For one blink, it takes around 0.3 to 0.4 seconds time. So for half an hour, you will be doing for the whole day. In the what you call in early infancy or childhood, the child or the infant doesn't blink the eye. Have you seen that? Very less, very less. But we blink eye much of the time. The infant blinks very less time. That is what you can observe from the infants. Now, we have got cameras, right? Cameras, CCTV cameras. Every room has got CCTV cameras. You are also, I think, under the camera. So our camera, the eye camera, has a span of 170 degrees of peripheral vision. You can tilt your eyes 35 degrees up, 50 degrees down, 45 degrees out, and 50 degrees towards the nose. This is the range you can, what you call, tilt your eyes. So it has got 170 degrees of peripheral vision. If I am looking straight, I can visualize the things which are going to my side also. It's around 170 degrees.
as I said, now one thing you might have watched, in the eye, we have got a pink thing inside the eye. It is said that the evolutionary leftover, that is evolutionary leftover, we used to have, now we have only two eyelids, right? The upper one and the lower one. We used to have the third eyelid, which is the pellica semilunaris, which is called the pellica semilunaris. The pink portion, which is leftover of the evolutionary. It is said that it is the leftover of the evolutionary thing. Now, regarding regarding your nose, you know the wonderful thing, the memory or the thing which you can, the olfactory thing which allows you to do. 50,000 different smells can be registered in your brain through your nose. The olfactory system gives you the efficiency of 50,000 different smells to what you call register it. So this is just fantastic thing about the nose. Now, one thing I would like to share with this is regarding your tongue. Most of the fast food centers are the product of your tongue, it seems, isn't it? We are what you are very much fond of eating different things, and we will be satisfying our tongue, right? Not the stomach. If we would have satisfied your stomach, we would have not gone so fat and obese. So we are satisfying our tongue. Hence, many fast food centers are there. I would like to say that around 9,000 taste buds are there on an adult tongue. In children, we have taste buds inside the cheek also. So the children shows much of the facial expressions when they have something in their mouth. Next, we have, this is just fantastic thing. Take a note of this one. You can stay without water for say 10 days. Many people fast on water without taking water. The Jain people, they go for 10 days fasting without water also. Without food, many people go for without food for a month also. But without breathe, can you go for fasting up to 2 minutes? Is it possible? Can you hold the breath for 2 minutes? It is quite impossible. Without breath, we cannot survive for even 2 minutes, isn't it? Those who practice and have the efficiency, the swimmers or some professionals, they go for around 2 minutes. But for us, it is very difficult. I would like to state that every day we will be breathing in air. I'm not talking about the oxygen. We'll be breathing in air around 500 cubic feet. That is half of our bedroom. That counts to around 10 into 10 into 10. That is length is 10, breadth is 10, and height is 10. It is 1,000 cubic feet. Half of the room we are breathing the air every day. If the lungs are open and stretched, they count the dissipation area of the gases. It is around 2,888 square feet approximately, which is the size of a tennis court. The size of a tennis court measures to around 78 by 36 feet. So around 2,900 square feet surface area from where the oxygen and carbon dioxide transportation within the blood and the lungs takes place. So this is just fantastic. You can carpet your 900 square foot flat, 3 flats, okay? 3 flats, you can have the carpet with your lungs. If you can open the lungs, you have carpet of 900 square feet. So 3 flats you can cover. So that's around 2,900 square feet. So when you sneeze, anybody has traveled on bike at a speed of 100 miles per hour? It is around 160 kilometers per hour. Anybody has traveled on bike at a speed of 160 kilometers per hour? The power of the lungs is that if something, what you call dust goes into your nose, you sneeze, isn't it? This power of the lungs is so much that it throws the thing outside with a speed of 60 to 100 miles per hour. It's just powerful. So much of power is there in your lungs, and it will throw out with the speed of 160 kilometers per hour. So again, a very fantastic thing I would like to share, that God or Almighty or the existence has provided the same breath count to everybody. As I have given some example over here, a man breathes
14 to 18 times in a minute when it is at rest. Okay, 14 to 18 times. Sometimes more when you do physical exercises. It's around 25 to 30 times. But when you are in resting condition, it's around 14 to 18 times. Now I have given the law of use and disuse. We know the law of use and disuse, and I have added something. It is about the misuse. Okay, now try to understand what I'm trying to tell. We have got the law of use and disuse, but there is even misuse. Now try to understand. See, I have given a calculation over here regarding a dog, a man, and a tortoise. The dog stays for around 16 to 17 years. Let us consider that it stays for 20 years. Okay, a dog breathes 40 to 50 times in a minute. So for an average, we have taken 45 times in a minute. Okay, in a minute, it is breathing 45 times. Okay, a man breathes 14 to 18 times. For calculation, I have taken 15 times as an average, 15 times in a minute. A tortoise breathes 6 times in a minute. So the tortoise stays for 150 to 200 years. Man, say average Indian life is around 60 years, and the dog for 20 years. Now the calculation, see the calculation, 20 years, every year 365 days, every day 24 hours, every hour 60 minutes, and in a minute 45 times. So it comes to around 47 crores 30 lakhs 40,000 times. What I mean to say, it is breathing in 20 years 47 crore 30 lakhs and 40,000 times. Similarly, let us consider a man who is staying for 60 long years. So 365 days of each year, 24 hours for each day, 60 minutes of each hour, then he is breathing 15 times in a minute. So the calculation again comes down to 47 crores 30 lakhs 40,000. So man in 60 years of life is taking the breath for 47 crores 30 lakhs and 40,000 times. Similarly, a tortoise staying for 150 years, the 365 days of each year, 24 hours of each day, 60 minutes of each hour, and in a minute, it is breathing 6 times. So again, the calculation is coming to 47 crores, 30 lakhs and 40,000. Now, can you tell me, a dog is staying just 20 years and a tortoise staying 150 years. Man is staying somewhere in between 60 years. If you want to stay longer, you need to breathe less. Okay, have you got my point? This is what I wanted to tell you. If you want to stay long, if you want longevity, one picture was there. I don't remember that name. Anand, I think so. Hindi picture, old picture. There was a dialogue. बाबू मोशा जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, है ना? So though you stay for 60 years, you should be healthy. You should not be unhealthy. So you need to practice asanas, yoga asanas, then the pranayama, whatever it may be, or something like physical exertion. So you will be breathing less times. I want to share with you the athletes who go for practice for say 10 long years or 15 long years. They breathe 8 to 10 times in a minute. That is what the efficiency is developed, the lungs efficiency. When they will be doing the practice for 2 hours, they will be breathing for 25 to 30 times in a minute. But as we are, say, let us consider ourselves as sedentary person, we are breathing 15 times or 18 times in a minute. The sportsman breathes 8 to 10 times in a minute. So he is not staying longer. What I mean to say, he is not staying longer because, like a tortoise, but he is staying healthy. है ना? जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. लंबी भी ना हो तो चलेगी, बड़ी होनी चाहिए. बड़ी मतलब क्या? You should be healthy, isn't it? You should not be on the burden of others. So others. Okay. So this is just fantastic thing about the what you call respiratory system. Now I would like to focus something. See, this is very interesting. When we come to money, no, everything understands. We are very what you call very particular about the money. So I would like to put that into the money. So let us see. A man breathes, I said, 500 cubic feet of air in a day. It amounts to, say, he is breathing 3 cylinders in a day. In a very general hospital, one cylinder of oxygen is costing 700 rupees. Okay? General hospital, not hi-fi hospital. They'll cost you around 2,000 rupees for a cylinder. So let us consider 700 rupees a cylinder. You will be breathing 3 cylinders in a day. Okay? In the hospital, when you are kept, 3 cylinders are required to keep you alive. Okay? Now that is costing 2,100 rupees. Okay, if we count it for 1 month, if you are staying on the cylinders for 1 month, it will be costing 63,000 rupees. If you count the amount for 1 year, it is 7,56,000 rupees. Okay, can you imagine?
you need to pay 7,56,000 to breathe for an year. If you stay the same way for 60 years, you need to pay just 4 crores 53,60,000 rupees. Okay. Then what the nature is providing in free. How much you have to pay? You have to pay 4 crores 53,60,000 rupees for the 60 years of life. Okay. Can you imagine that what you call nature is providing so much in abundance that it is providing 4 crores of oxygen free to us. Today we are charged with electricity, isn't it? We are charged with what you call the water bill. After 40 to 50 years, it is a possibility if the man starts deteriorating the nature in the same way, in next coming 40 to 50 years, the municipal corporation will be putting a meter on your nose. You need to pay the amount for oxygen you are breathing. You just try to understand what I'm trying to tell. I'm just focusing on the future. So we are focusing on the sustainable development. Till today, we have developed, but today it's need to think on the sustainable development. Today's development should not hamper the future. That is what is sustainable development. Have you understood the cost which you are paying for the oxygen? Yeah, this is just fantastic. Now, let me have a test with you. Okay, just a test for you. How much is efficient your lungs? 3 tests I am giving for your lungs. Okay, first test is that you need to breathe out. You need to check the chest girth. Okay, now count the chest girth. If say it is 30 inches, right? And after breathing, if it counts to say 33 inches, then your lungs capacity is good. The difference between the exhalation and inhalation should be of 2 to 3 inches or 6 to 7 centimeters. If that is there, the difference, it is very good. Your lungs capacity is good. Second test, you need to hold your breath. That is Antar Kumbhaka, as we say in pranayama, the yoga language. Antar Kumbhak means you have to breathe in and hold the breath. If you can hold the breath very comfortably for 45 seconds, your lung capacity is good. Okay. Second test. No, don't go for that. Just don't, what you call, just squeeze your nose and mouth. Just keep it comfortable. If you are comfortable with 45 seconds, it's your good. The third test is very interesting. You need to light a candle. Okay. Small candle, what we blow out during our birthday. One candle, you need to blow it from 1.5 meters. Now I'm giving you the table. Now see the table. If you can blow out the candle from 1.5 meters, your lungs age is of 20 years. Now try to understand. At what I said, at 20 years of age, every means organ is well developed. It is at its peak. So you need to blow it. If you cannot blow, just move 25 centimeters closer. That is 1.25 meters or 125 centimeters. From 125 centimeters, you need to blow. If you can blow out the candle, your lungs age has become 30 years. Okay. If you cannot do that, just go closer by 25 centimeters from 1 meter, that is 100 centimeters. You try to blow out the candle. If you can blow out, though you are 30 years of age as on today, your lungs has gone 40 years of age. Okay. So the lungs are deteriorating. Now try to understand. If you cannot blow out from 1 meter, go up to 75 centimeters, that is 0.75 meters. And now try to blow. If you can blow out, your lungs are at 50 years of age. And if you cannot blow from 75 centimeters, then your lungs are of 60 years of age and you are requested to meet the doctor. Fine. You are requested to meet the doctor. So make sure that your lungs are efficient and what you call healthy. Next, we'll talk about our bones. Okay. I said we will be going what the chance we have got. This is the chance we are talking about, not choice yet. Okay. Still, it is a chance. We are talking on the chance, what we have got from our father, mother, or from the Almighty, whatever it may be. So every inch by inch, if you calculate the bone strength, it will be more harder than the steel, it is said. It can sustain a load of 5 pickup truck load. Okay. 1 square inch of bone can sustain 1200 pounds of load. 1200 pounds, if you want in kgs, divided by 2.2. Okay, it will come to around 500 and 550 kgs, right? A square inch of bone is able to sustain 1200 pounds of load. Okay, we have got 206 bones until we get meet with an accident. They are 206. The children born with the 300 bones, afterwards they fuse in
and few bones are collected. Now, many times we meet with an accident, and we are implanted with the plates or screws, external things, right? After 10 to 12 years, we see that the plate has gone, what you call weak, and the plate has been broken. And again, we need to go for operation. But without operation and without plates and without that screws, external screws, which are man-made, we have got the bones with so much of strength. We need not have to look it for 60 long years. No maintenance, no maintenance. But the plate need maintenance. Your screws need maintenance after 10 to 12 years. See, even the plates or the metal is also what you call of less quality than the bones. What I must say here. Okay, this is about the fantastic thing about the bone. Now, everybody weighs, right? We will be just witnessing a chart at the doctor's clinic that so much of height for a man, so much of height for a woman, we should have so much of weight. But that is not true. I'll show you something different. Okay. Now, what you need to do is, see, you need to keep your elbow like this, right? Now, you need to put your arms and you need to tap the two external bones. Okay. You keep your elbow 90 degrees. You take the measurement of this one. You put it on a scale. Okay. Now, the table is given here. It is without shoes, say men and women, elbow breadth for medium frame. Medium frame sizes are given. If your height is of 5.1, say 5 feet and 1 inch, okay, then if it is counting 2.5 inch, this breadth 2.5 inch to 2 and 7 by 8 inch, so you think that it is of medium frame. Okay, if it is less than that, you are into the what you call small frame. If it is more than that, it is of larger frame. Okay, now you got this one. Now we will see what the weight is. Okay, if now you have considered yourself as in the medium frame, or say in the small frame, or in the large frame, we have considered. Now this is the chart for the weight for men. The first column gives you the feet and inches height, 5 feet 1 inch to 6 feet 3 inches. Now the small frame, see, this is in pounds. Okay, the weight is in pounds. Now just I'll explain the lower limit and the upper limit of this one. Many times we we misguide. We say that if this is you are overweight, then you are obese. But it is not like that. It is according to the frame. So when we prescribe something, no, it should be very defined. So what I mean to say, there are different types of frame. If we see the North Indians, they have got the larger frame. Okay, then you cannot say the man with 5 feet 1 inches, if he is weighing 145 pounds, he is of overweight or obese. You cannot say that because he is falling into the large frame. Now I'll tell you the difference. If I suppose, let us consider a male of 5 feet 1 inches, the small frame is from 123 to 129 pounds. Okay, and the larger frame is showing 133 to 145. The lower limit over here is 123 pounds and the upper limit is 145 pounds. The difference is around 22 pounds. Okay. Now, with this, we can conclude that if the frames are of different size, you cannot say obese or overweight. You need to see this one, and only then you can conclude with the following. This is for the male and this is for the female. This is for the female chart. It is from 4 feet 9 inches to 5 feet 11 inches. Then the small frame for second column. The third column is medium frame. And the fourth column is about the large frame. Now, this is just interesting. You should note that this one. Now, again, coming to the muscles, as it is said, we have got around 556 muscles, which are making us to move, which are making us to give a good posture, which are making us to give a good structure or personality, whatever it may be. So they are around 656. We say that 4 to frown and 40 to laugh. Okay, means what? If you want to keep your face like this, dumb and this one, it needs only 4 muscles. But if you laugh, no, it will be around 40 muscles which are involved. So they tell to laugh because 40 muscles are involved in it, and your facial muscles act in a way. So you will never have that what you call palsy, some problem with the face. So try to laugh whenever you want. Okay, this is very fantastic thing. 30 muscles are there which are on the which will be giving facial expressions for 30 muscles. Okay.
I would like to share one more thing. 1 cubic centimeter of muscle can generate 50 newtons of force. If somebody is from physics and mathematics, they know what is 50 newtons. But for everybody, I'll just like to share. It is around 5 kgs. We know 5 kgs, how much is 5 kgs, okay? We cannot predict what is 50 newtons, so we know 5 kgs. So 1 cubic centimeter, you know what is cubic centimeter? You might have played snake and ladder. We have that dice, okay? The dice which is marked 1 to 6. You know the dice which we play snake and ladder game. So the dice is of 1 square centimeter. The size of that is around 1 square centimeter, and that size of muscle can generate 50 newtons of force. Everybody cannot be a sprinter or everybody cannot be a marathon runner. They have got different qualities, as we have got different qualities. Every man is made up of what you call, he is genetically determined. As the height is determined, similarly the muscle composition is genetically determined. You have fast twitch fibers and slow twitch fibers. Now the content or the percentage is different in every human being. So if the sprinter is there, he will be having 80% fast twitch fibers and 20% slow twitch fibers. Similarly, on the contrary, if a marathon runner is taken, he will be having 80% slow twitch fibers and 20% fast twitch fibers. So this is what the content is different. If a 400 meters, 1500 meters athlete is there, he'll be having 50% of fast twitch fibers and 50% of slow twitch fibers. So everybody cannot be a Usain Bolt who can make and record in 100 meters. Okay. So there are different qualities in human being. So that is what you call the specificity or the individualization of a human being, because you are defined genetically with your slow twitch and fast twitch fiber. Hence, while selecting a sports, I would like to request all the maybe some are parents also here. The parents may be interested in their children to go for sports, but I suggest them to first check their slow twitch and fast twitch content. Only then you can select a sport for that, because if the child is content of slow twitch fibers 80%, and if you are trying to make him a sprinter, your whole lifetime will be spoiled. The coach is also spoiling his time. The child is also spoiling his time. The parents are also spoiling the what you call the time and everything, money and all these things. So you need to check the fast twitch and slow twitch fibers. I would like to state one more thing. Everybody has got a reaction time. The best reaction time ever noted was of Ben Johnson. It was 0.09 seconds. That was recorded in 1986 Olympics, where he what you call score where he earned 2 gold medals, 100 and 200 meters. But the gold medals were again taken back due to drug abuse. So our reaction time is between 0.17 to 0.21 seconds. If the reaction time is good, your reaction time is good, what happens is you can sustain with then you can survive from an accident. Okay, you can survive from the reaction time. If the reaction time is good, you can survive from an accident very easily. I have never seen a sportsman dying of accident. Okay, they might have died in the sports itself because of overspeeding or whatever it may be, a motorcycle race and all these things. It is a sport, but on road, they met with very less accident, sportsmen, because they have good reaction time. So every individual on an average will have a reaction time of 0.17 to 0.21 seconds. It is 17th part of a second or 21st part of a second. Okay, and now regarding muscles, let us test how mobile you are, or what is your mobility and what is the age of your joints and your muscles. So I have given a chart over here. If you can see, what you need to do is you have to stand erect, you have to bend in your trunk, flexion in the trunk, and you have to try to put your what you call palm on the ground. If you can put the palm on the ground without bending your knees, that is underlined. Without bending your knees, if you can put your palms on the ground, your mobility is as good as a 20-year adult, say young, okay, 20-year. Though you are 40 years of age, your mobility of the muscle and your joint mobility is very good. If you can touch the floor with just the fingers, your mobility of the joints and your muscles mobility or ligaments mobility has gone to 30 years of age.
If you cannot touch and you are 10 centimeters above the ground, say let us consider, we are very rigid. A psychological one research is there. Those who are adaptable, no, they bend very easily in their trunk. It is also seen the vice versa. Those who are good at flexibility in the trunk are good at adaptability in the mind. It is a research done by few scientists. Now, if it is above 10 centimeters from the ground, your muscles and your joint mobility has gone to 40 years of age. It has gone old for 40 years. If the gap is 20 centimeters from the ground, if you bend forward and if the gap is 20 centimeters, your mobility is as a person with 50 years of age. Okay, this is just again a simple test which everybody can do, and everybody can check their mobility or the age of their muscles and joints and ligaments. Okay, now next, this is just a fantastic thing. This is about your cardiovascular system. It is about your heart. We call athlete's heart. You know what is athlete's heart? It is hypertrophy of the heart. Hypertrophy is the increase in the size of the heart, right? Yes, yes, yes. If you Rule number 6, can you switch off your mic? Thank you, sir. Thank you very much. Yes, I'll just again elaborate one good, fantastic, very poor thing in our body. See, again, a very poor thing. If you attach all the arteries, arterioles, veins, capillaries, and all these things, it counts to around 60,000 miles, which is in kilometers, 96,000 kilometers. Till India today is having, I think, around 70,000 kilometers of railway line. Okay. In our body, it is around 96,000 kilometers of pipeline. Can you imagine? 96,000 kilometers of pipeline, which can circumference the earth 2 times. Which can circumference the earth 2 times. And if a blood is pumped from the heart A, let us consider A blood is pumped from the heart. Let us name it A. It comes back again to heart in 40 seconds. It travels all the way to the body and it comes back again to the heart in just 40 seconds. This is just fantastic thing. Now, let me tell you, we say that the normal blood pressure, systolic and diastolic is 120/80, right? That is mmHg. Now, what is mmHg? Again, I'll state that those who are from physics and maths can tell what is mmHg, what is the pressure. But for the others, let me have the understanding. If you cut the main artery, the blood pumped, that is 120 mmHg, what the pressure is, I'll just, for understanding, I'll let you know. If you cut the main artery, the blood pumped against gravity is 6 feet above the gravity. Can you imagine? That is 120 mmHg pressure. So that is systolic pressure. When the heart pumps the blood, that is when it contracts, that is systole, it pumps with a pressure of 120 mmHg. Nowadays, the doctor tell that 140/90 is normal because everybody is carrying the stress, and out of 100, 90 people are recorded with 140/90 mmHg. So nowadays, they have made that parameter change and they say that 140/90 is normal. Okay. But actually, it is 120/80 mmHg is normal. Next amazing thing about the blood, again, let me say, tell you that the motor which is given in our body, that is the heart, which pumps 5 liters of blood in a minute. Okay. You know that cardiac output is stroke volume into heart rate. That is, stroke volume is around 70 ml, then the heart rate is around 72. When you multiply, it becomes 5040 ml. That is 5 liters. 5,000 ml is 5 liters, approximately 5 liters. Right. Now, I'll tell you, can anybody tell how much blood is there in the body? Anybody? How much blood is there in the body? Individual. People say that it is around 5 liters, but it is what you call again an unjust thing. If a man is of 50 kgs and if a man is of 100 kgs, if both are carrying 5 liters of blood, then it is unjust, I think. You know? It is not justified. So we will be we are having 1/12 to 1/13 of our body weight. That is blood quantity. Sometimes it's 5 liters, 6 liters, 7 liters also. Okay. That is according to the weight. It is 1/12 or 1/13 of our body weight. Fine. Okay.
Now let me have this thing. This is cardiac output. We call it cardiac output, which is 5 liters in a minute when you are in resting condition. I'm talking about resting condition. Okay. Now when you are resting condition, it is around 5 liters in a minute. In an hour, it will be 300 liters. In a day, it will be 7,200 liters. Okay. Your heart is pumping 7,200 liters in a day. That is, I think you might have seen the water tanks of 1,000 liter. So around 7 tanks of 1,000 liter. So that will be the pump, that is the blood which is pumped out of the heart every day. Okay. So if you calculate for 1 year, it is around 26 lakhs 28,000 liters. Okay. Just 26 lakhs 28,000 liters. And in 60 years of life, it is pumping 15 crores 76 lakhs 80,000 liters without maintenance. If sometimes 2 or 3 heartbeat misses, you again get angry. Oh, आदमी था यार मर गया, है ना? Now see, if it is without maintenance, it is pumping 15,000. Any machine in the world without maintenance, can it pump the water to 15 crores 76 lakhs 80,000 liters? It is quite impossible. If you take that Tullu motor, which we'll be using at household, that half HP and 1 HP. Okay. Now I'll give you the calculation, how much electricity is required to pump that much liters of water. Okay. Now see, it is doing us for free. No electricity bill we are paying. If you want to pay the bill, now see, let us consider. So I said mathematics of physiology, some things which are very countable. Okay. Now let us count the bill. Okay. We'll talk about the heartbeat. Okay. Every minute, how much it is, how much beats are there? It's around 72. We say normal, isn't it? You know, the good sportsmen like Carl Lewis, Boris Becker, the resting pulse rate, you know, it is 36 beats per minute, just 36 beats per minute. Can you imagine? You'll be telling that every impulse system has failed. The sinoatrial node is failed, atrioventricular node is failed, the Purkinje fibers are failed, and the bundle of His has failed. We'll be saying this all. But the resting heart rate is 36. Ours is 72. So we call it athlete's heart. You know the amount of blood which is pumped from the Carl Lewis heart? It is 125 to 130 ml per beat. It is just 70 for us. Can you imagine that? That is what athlete training does. So we call it athlete's heart or hypertrophy of heart. This is just fantastic thing with the training. Boris Becker, the resting heart rate is 40 beats per minute. So every good athlete has got very less beats because the resting cardiac output is always 5 liters for everybody, though it is Carl Lewis or ourselves. Okay, now let us consider 70 times in a minute. So 42,000 times 4,200 times in an hour. In a day, it is around 1,800,000 times. In a year, it is around 3 crores 67,92,000 times your heart is beating. You know, have you heard the song, My Heart is Beating? Oh, the similar way. So in a whole lifetime, it is beating for 220 crores 75 lakhs and 20,000 times. And if 2 or 3 beats misses, what happens? What happens? Oh, abhi tha, abhi chala gaya, hai na? He's dead now. Okay. See, you cannot, if you cannot excuse the heart for 2 or 3 beats, let him go, no? Let it go, let it go. What happens? 2 or 3 beats. तू भी रेस्ट कर ले यार, बोलो उसको. कभी तो ऐसा बोल दो कि भाई तू भी रेस्ट कर ले थोड़े बीट्स के लिए, है ना? बोलते हैं हम लोग. नहीं, नहीं, we don't say that because we will be no more. See, the heart tells that I'll work 23 hours for you. You just work 1 hour for me. Okay. I request everybody here to at least work for make yourself work for the heart for 1 hour. It will be working for you for 23 hours. Okay. Efficiently. Fine. Okay. As I told you, just the electricity required to so much to pump so much of blood in a lifetime. So what was the count? It was 15 crore liters. Okay. So see, if we take the domestic rate of electricity, you will be requiring 30 lakhs 66,000 rupees for the whole lifetime to pay for the electric company. Fine. How much? If one heart is beating and if it is pumping 15 crore liters of blood, it requires 30 lakhs 66,000 rupees. Okay.
but it is still free. So we are so poor, right? Okay. Right. Okay. I have not considered the rate of I have considered the rate, domestic rate, and not considered the commercial rate. If the commercial rate is there, you need to pay 60 lakhs. Okay, double rate. Okay, now again a test for you. You just take it for take the note, or you just take the what you call screenshot. This is just fantastic to evaluate yourself. I have given the age group in the first column. First four columns are for the men, and the second four columns are for the women. Represent excellent, G good, S satisfactory, and P for poor. Now we need to do what we need to do is, you might be knowing how to measure the pulse rate from the carotid artery or from the radial artery, from here or either from the carotid artery here. Okay. You have to take the basal pulse rate. Now you don't want to take. Now you don't have to take. You take the basal pulse rate. What is basal pulse rate? It is the first pulse rate when you get up from the bed. Okay. You need not have to get up from the bed. In the bed, you can take with the what you call the mobile or the wall clock. Okay. 1 minute of pulse rate. Not for the day. You need to take it for 10 days. That is called basal pulse rate. Now you need to count them. You need to divide by 10. So it will be around average of 10 days. Okay. So 10 days average, you need to count the basal pulse rate. And now you have to compare with this chart. Okay. If you are ranging between the age 20 to 29, and if your heart rate, basal heart rate is for males, I'm talking about. For males, if it is 59 and less, your heart is in excellent condition. Okay. If it is 60 to 69, it is in good condition. If it is 70 to 85, it is in satisfactory condition. And if it is counting for the last 10 days, if you are counting 86 plus for the basal pulse rate, then you need to meet the doctor immediately. Okay, fine. So similarly for 30 to 39 years of age, 40 to 49 years of age, and 50 plus age. Okay. Similarly, the last four columns are for the women. If you are between the age 20 to 29, if your basal rate counts to 70 and 71 and less, your heart is in very excellent condition. If 70 to 77, it is in good condition. 78 to 95, it is in satisfactory condition. If it is counting 96 plus for the last 10 days in the basal pulse rate, then you again need to meet a doctor. This is just fantastic. I request all of you to just take the screenshot if you want. Otherwise, if Rafe sir tells me, I'll share this with you. Okay, fine. Now about kidneys. Again, still we are in the chance. Okay, we are not we have not come to choice. Still we are in the chance. What we are having, we are just seeing, we are looking, we are observing, we are witnessing. Now, every day, your kidney filters around 40 gallons of blood, okay, fluid, body fluids, 40 gallons. 40 gallons comes to around 151 liters every day, okay. We have our domestic filters. How much water every day you filter with that filter plant? Most probably 10 to 20 liters. 20 liters for a family, it's sufficient for drinking, isn't it? 20 liters is more. I said 151 liters a day. Okay. Now your kidneys are filtering 151 liters a day without non-stop. If you want to count the, again, in the electricity required to filter so much, what you call, for 60 long years, it requires 6,13,200. Okay. How much? 6,13,200 rupees you need to pay for the electrical company to filter so much of thing every day, 151 liters a day for 60 long years, and without maintenance, that too without maintenance. Now I have kept the list. If you know the rate of all these things, you can share with me. I could never find the rates for what we have got inside and what the chance. Are you a poor? Are you a poor thing? You have got very poor thing, isn't it? Say brain cost around 10 raised to infinity rupees. Okay. Eyes, if somebody donates, it's well and good. Fine. For free. Then it is okay. Heart transplantation, say let us consider, say 50 lakhs rupees. Okay. Kidney, per kidney 20 lakhs. So into 2, 40 lakhs, right? Liver, if transplanted, 80 lakhs. Other things, I don't know the rates. This is just a probability what I'm thinking. And if you count all, no, you're just a poor thing. You're just not a poor, but a billionaire. Okay.
If you want to sell each and every part, it's in billions. है ना? Okay, so why waste such property? I would like to request everybody to care what you have got. Now the choice is with you. Now how you want to care, it is with you. And I think I request again everybody, because I can only request. I cannot suggest, or I cannot make them compulsion. At least make yourself available for 1 hour on the ground, or play something for at least half an hour. The best ventilation, the best meditation. I would like to share again an incident. One of our friend who is by profession a CA has came to me, and he said, "Bhaiya, mujhe na meditation sikhao." What he told, "Bhaiya, mujhe meditation." He wants to learn meditation. Then we were playing badminton in the court. We were playing badminton. I said, "For some time you play badminton, then I will teach you meditation." Okay. As I wanted to show him what is the effect. So we played for half an hour to 40 minutes. Then we came for our stretching and cooling down. Then I asked him, "Bhaiya, आपने इतने समय में, आप सीए हो बाय प्रोफेशन, 30 to 40 minutes के दौरान कितने अकाउंट सेटल किए दिमाग में?" ही सेड नथिंग. मैंने कहा, जिसने आपको पैदा किया है, माँ बाप, उनके बारे में कितने बार ख्याल ख्याल आया? ही सेड एक बार भी नहीं. मैंने कहा, जिससे शादी की है, जिस आपके बच्चे भी है, उनका ख्याल कितने बार आया? ही सेड नहीं आया, कुछ नहीं आया. बोला, ये कुछ नहीं आया तो क्या आया? वो बोला, कुछ नहीं, वो बैडमिंटन का शटल कॉक देख रहा था, मैं इधर से उधर वो कर रहा था. मैं बोला, इससे अच्छा मेडिटेशन कुछ हो ही नहीं सकता ना. हो सकता है. If you sit idle, no, thousands of thoughts come in your mind. But if you play something for half an hour, no, like a child, you should play like a child. Winston Churchill says that we say that we are old, so we are not playing. Winston Churchill says we are not playing, so we are old. What do you want to say? Whether our thing is correct or what the Churchill is saying is correct? I think the Churchill is saying correct. Because we are not playing, we are old. We say that we are old, so we are not playing. So this are something different perspectives. Okay, so I want you to unleash your potential, live the best with all these things what you have got. What we do is we just neglect everything, and we what you call invite all the diseases. We would like to pay in the hospitals. We are earning for the hospitals, it seems. And the city, we call our city is very developed city because we are having multi-speciality hospitals. See, is that a developed city? No, no, no. I think where there are no hospitals is a developed city, because everybody is healthy over there, right? So this is not development. If you are having multi-speciality hospitals, immediately you are hospitalized, you are treatment. You need not have to go there. What I mean to say is, don't touch. Prevention is better than cure, no? That is curative part. I am suggesting is preventive part, right? So prevention is always better than cure. I don't want you to be hospitalized anywhere. Okay, thank you. Okay, now I'll just brief about the effect of it. I'm having time, no? Till what time I am expected to deliver the lecture? Yes, sir, you have time, sir. Yeah, okay. Up to 2 o'clock you can continue, and Okay. before that, if we take break of 10 minutes, it will be better. At what time you need break? You just tell me. It is depend on 12:30? you, sir. 12:30? It will It's depend on okay? you. Yeah, Yes. no, 12:30 will do, because 1.5 hour, because the receptivity will go low. You need to furnish it with the glucose. Some tea it will be good for you. Okay, your brain needs glucose, what I think. So after 1.5 hour, we'll take a break and then we'll continue. Fine. Am I clear? Am I Yes, sir. okay? Yeah, yeah. Okay, thank you, sir. We'll take break at 12:30 for 10 minutes, and again we'll proceed. Right. So I would like to enlighten you about the effect of exercise on various systems. Now, what I said up till now was a chance. Now, regarding the choice, we started doing exercise. Now, what are the effects we see when we are doing the exercises? What are the effects on various systems? Let us see that. Okay, first we'll start up with the skeletal system. What happens with the skeletal system? Say it increases the bone density, right?
what happens? It increases your bone density. Playing or the exercises increases the bone density, preventing the conditions like osteoporosis. Osteoporosis means the degradation of the bone. The density of the bone reduces and it will become brittle and very fragile to break. Fine. So when you start doing exercises, the bone density increases and what you call the chances of fracture or whatever it may be, the problems with the bone will go very less. It will improve your joint health and it will reduce the risk of the injuries. Now, after consider the skeletal system, as we know, the football players, they are very robust because they will be playing very hard and their bones are very strong. So because of that, because of playing football, their bones go very robust and they are very thick in density. Hence, they meet with very less accidents, or if they meet with the accident, the injury percentage is very low. Fine. With the effect of exercise, we can see in the muscular system, muscle hypertrophy and strength gain. Okay. The size of the muscle increases. As I said, 1 cubic centimeter of muscle can generate 50 newtons of force. If the size of the muscle increases, definitely the cubic centimeter means the volume also increases and the force generating capacity also increases. Hence, it helps in gain in strength. More the hypertrophy, more will be the strength, more will be the, if you go on doing exercises regularly, one fiber, muscle fiber is supplied with say 2 or 3 capillaries of blood, which will be supplying oxygen and nutrients to the muscle fiber for contraction and various exercises. But in sportsmen, the meat turns coarser, very reddish, and if we can witness in the what you call hard working animals, the meat is coarser because of the capillarization. And if we start doing exercises every day, our muscle fibers will have capillarization, means the increase in the capillaries. If one fiber in a sedentary person is supplied with 2 or 3 capillaries, in sportsman, one fiber of muscle is supplied with 7 to 8 capillaries of blood. So there will be less fatigue in the muscles, what you call more oxygen transportation, more nutrient transportation to the muscles, and hence less fatigue can be observed in the regular training person. Now you can improve the coordination because motor recruitment, we have what you call motor memory. As we know that we will be driving our vehicles, right? Say, let us consider we are driving our two-wheeler. Fine. So what happens is, the brake, the gear system, the clutch system, the accelerator. You have got that memory, motor memory. If you unknowingly take others' bike for riding, and if you try to kick also, you will have that senses in the mind that my kick is not so hard. If you turn up with the accelerator, your accelerator system and the other accelerator system may be hard or loose, whatever it may be, there will be difference. Immediately your mind comes to know that it is not my bike because you are acquainted with your systems. See, this is called motor memory. You have your motor muscles has got the memory, and which will be helping you to identify different types. So when we start playing something, more coordination is developed, more motor unit recruitment will be there, and you have very well ability to coordinate with the different types of what you call task and whatever it may be. So the third is cardiovascular system. If you do exercise every day, what happens to the cardiovascular system? As I said earlier, that the cardiac output under resting condition is 5 liters for everybody, for a sportsman, for a layman, for a sedentary person, whatever it may be. But when you start doing exercises at a rate of 120 beats per minute, if your what you call your heart size has grown more, then if you are doing, a sedentary person is doing at 120 beats per minute and a sportsman is doing 120 beats per minute, the stroke volume of a sedentary person is 70 ml and the stroke volume of a sportsman is 100 ml.
120 into 70 is around 12 sevens are 84, 8,400 ml. That is 8 liters, 400 ml. But in a sportsman, if we say 100 ml, and if you are doing with 120, that is 12 liters. So a sedentary person's muscles are supplied with 8 liters, 8.5 liters of blood, whereas in a sportsman with the same intensity is supplying 12 liters of blood. So more the blood to the muscles, more will be the supply of oxygen, more will be the supply of nutrients. Hence, there is no fatigue in the muscles, or you can see that they are working very efficiently. So your cardiovascular system also improves, your stroke volume increases. There is a second thing where as I said, hypertrophy of heart. That is the second thing at the resting thing is bradycardia, means lowering of your heart rate. I said 5 liters is cardiac output for a sportsman as well as a sedentary person. But when it is 5 liters, now automatically what happens? The heart rate reduces. As I said, as I given the example of Carl Lewis and Boris Becker, it is 36 beats and 40 beats. It is bradycardia. It is called bradycardia, lowering the resting heart rate. That is called bradycardia. And then again, what happens is more the pumping of the heart, more will be the capillarization and to the heart itself, because heart also needs fuel and energy to pump. Okay. Now more capillarization is there for the heart, then the heart will not get fatigued, or it will not it will respond very properly. So more blood supply to the heart also, that is coronary arteries. So they will be supplying more blood to the heart also, right? So I have a question. capillarization also increases in the heart. Sir, Now sir, yes. sir, I have a question. I have heard about that a human being have 6 liter of blood. So, is there some prescription that if we are the sports person, then blood level is high? No, I'll, yeah. Can we You are have saying that question because sessions afterwards? Can you note down that one? I'll answer your question. Definitely, I'll answer. okay, okay, Huh? okay, thank Just you. let me finish this small part. Then Okay, we'll start with the question answers. Okay. Right. okay. Okay. On respiratory system, again, we see that the lung size increases. That is what happens. Actually, we have 5 million alveoli. That is around 50 lakh alveoli are there. Alveoli is the last part of the lungs from where the oxygen and carbon dioxide dissipate into the capillaries, that is into the blood. So as it is observed, 85% of the alveoli are working in the sedentary person, whereas 98% alveoli are working in the sportsman, because of there will be no mucus in the alveoli stored, and more clearance of the mucus in a sportsman. Hence, 98% alveoli work for a sportsman. Hence, he has better diffusion capacity of oxygen and carbon dioxide into the blood. So it's the lung capacity increases very efficiently. So more the oxygen supply, see, everybody is provided with the same quantity of oxygen from the atmosphere. We have around 21% of oxygen in the atmosphere. So everybody is breathing the same atmospheric air. Everybody is supplied with the same quantity of oxygen. If I inhale, say 500 ml of air, say around 100 ml of oxygen is there. If I utilize 70 ml of oxygen, and during expiration, I remove the oxygen is removed, 30% of oxygen is thrown out. What happens actually is, see, this is called VO2 max. What is VO2 max? It is volume of oxygen uptake capacity of an individual. It is very good in long distance sportsmen, or it is very good those who are regularly exercising, than a sedentary person. If you compare the sportsmen, it is good in long distance runners or the enduring sports. When we compare with the sportsman and non-sportsman, it is good in a sportsman and it is not good in a non-sportsman. So even see, we breathe three types, right? For the first is clavicular breathing, the second is thoracic breathing, and excuse me, roll number 75. Can you switch off the mic? Roll number 75.
Sir, as a ওদের co-host, you can অর্ডিনেন্সের mute কোনো her, sir. মানে মানে কোনো লিমিট নেই, বাট বিকজ ওরা টিচার As a সেও তো পারে। co-host, you can mute her, sir. এটা তো আমাদের আরো বেশি অড লেগেছে। Yeah, thank you. Thank you very much. Okay. Now what I want to express is we are having three types of breath. The सर first हिंदी one में is बात करो ना थोड़ी। हिंदी में। हाँ जी बात कर सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं। हाँ बाकी के कंफर्टेबल है हिंदी में? हाँ अच्छा ठीक है, कोई Yes, बात। sir. Yes, ओके sir. ओके ओके, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके फाइन, आई नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। बात ऐसी होती है कि हम लोग तीन प्रकार के ब्रीथ करते हैं, एक क्लैविकुलर ब्रीदिंग करते हैं, एक थोरासिक ब्रीदिंग करते हैं, थर्ड डायफ्रामल ब्रीदिंग करते हैं। अभी आपने अगर गौर फरमाया होगा तो देखना है कि आपको इन्फेंट जो है ना वो डायफ्रामल ब्रीदिंग करते हैं, हम लोग जो करते हैं वो क्लैविकुलर और थोरासिक ब्रीदिंग में अटक गए सो इसीलिए हम लोग क्या है, शैलो ब्रीदर से मतलब उथला सांस लेते हैं। अब उनको डीप अगर सांस लेना है तो डायफ्रामल मतलब पेट से जब हम सांस लेंगे तो दैट इज कॉल्ड डायफ्रामल ब्रीदिंग। सो यू नीड टू ब्रीथ डायफ्रामल ब्रीदिंग। आपने मैं आप सभी से एक छोटा सा ये शेयर करना चाहूंगा। इफ एनीबडी इज हैविंग हाइपर टेंशन प्रॉब्लम, दैट इज हाई बीपी प्रॉब्लम, you can have this experiment and I can give you in very good terms. See, while sleeping in the night, no, you put your what you call palms on your stomach and you try to breathe 100 times with your stomach. Now take it again. I am saying you try to breathe 100 times while going to bed. After going to bed, आप सोते समय क्या कीजिए, पेट पे हाथ रखिए और 100 बार पेट से सांस लेने की कोशिश कीजिए। बात ऐसी है कि सब जो उस दरमियान आपको नींद लग जाती है, समझो उस दरमियान आपको नींद लग जाती है, तो पैटर्न आपका रात भर ना पेट से सांस लेने का रहेगा। आपने गौर फरमाया होगा, मैंने ये इस बात को गौर फरमाइए आप, एक छोटा बच्चा जब सोता है ना तो उसको देखना है, वो पेट से सांस लेता है। और हम लोग पेट से सांस लेना भूल गए क्योंकि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए, है ना। तो हम लोग पेट को जो सांस जैसे लेनी चाहिए ना हम लोग नहीं ले रहे, हम लोग उथली सांस ले रहे। इसीलिए हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं ना तो हम लोग यॉन करते हैं, देखा है आपने, यॉर्निंग बहुत होता है। क्यों? थोड़ी देर बैठ जाओ, एक डेढ़ घंटा एक जगह पे, आप बड़ी सांस लेंगे, कैसे कर लेंगे, ऐसे बड़ी मुंह से सांस लेंगे, है ना। तो वो हो क्या रहा है, बेसिकली हम लोग पेट से सांस लेना ही भूल गए। इसीलिए जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना ये उसी की वजह से हो रही है। और मैं इसीलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि 1 घंटा अगर आप वर्कआउट करोगे ना, उस समय में आपकी सांस कम पड़ेगी, तब आप पेट से ऑटोमेटिक सांस लेना चालू करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपसे, आप रात में ये कोशिश कर लेना, जिसको भी हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, उसने ये कोशिश करना 1 महीना भर ये करके फिर से बीपी एक बार चेक करना, एवरीडे चेक करना, इसके जिसके लिए मुमकिन है वो करना है। लेकिन आज अगर आप चेक करो और पेट से सांस लेने की कोशिश करो, रात भर अगर वैसे ही होता है, जब भी आपको कुछ याद आए ना कि भाई सांस लेना है, ऐसे तो याद नहीं आता, हम लोग सांस को भूल गए, सिर्फ हमको सांस याद रह गई है, मतलब बहु सांस वाली सांस याद रह गई, अपनी सांस भूल गए हम लोग, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है वो भूल गए। मैं सोच रहा हूँ कि जब भी आपको याद आए तो पेट से सांस लेने की कोशिश करना। अगर ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा डीप ब्रीदिंग होगा। और यही होता है कि आपका डायफ्रामल ब्रीदिंग अच्छा हो जाता है जब आप कोई वर्कआउट करते हो। सो दिस हेल्प्स इन योर रेस्पिरेशन। आई सेड VO2 मैक्स इंक्रीज होगा, आपका एंड्यूरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा जब आप वर्कआउट चालू करेंगे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है कि अच्छी एक्सरसाइज करोगे तो खाना भी बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका गट मोबिलिटी अच्छा रहेगा, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स रहते हैं जैसे डायबिटीज वगैरह रहते हैं उससे छुटकारा हो सकता है, या फिर उससे काफी दिन तक बच सकते हो। बहुत बार एनर्जी बैलेंस जो रहता है ना वो उसमें मदद करता है। और ये सब चीजें किस वजह से होती है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेज नॉट फॉर अ डे or a two, say at least for 63 days. What you know the importance of 63 days? You might be the knowing, आपको पता होगा 7 का इम्पोर्टेंस क्या है ना। ऐसे 21 का इम्पोर्टेंस क्या है, 108 का हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत से लोग ना ये प्रदक्षिणा करते हैं ना, तो कभी 108 की लगा लेते हैं, कभी 21 की लगा लेते हैं, कभी 7 की लगा लेते हैं। तो 7 का इम्पोर्टेंस क्या है, 7 दिन है, 7 चक्र है, 7 रंग है, 7 सुर है, बहुत सारे 7 7 है। बेसिकली हमारे अंदर जो 7 चक्र है ना
उसके ऊपर से 7 डिफाइन हुआ है। 7 का जो इंपॉर्टेंस है ना, इट इज ऑल रिलेटेड टू योर फिजिक। 21 का क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता है? 21 बार कर लो। 21 बार क्यों कर लो भाई? 21 दिन में हमारा होम्योस्टेसिस साइकिल एक कंप्लीट होता है। हर एक अंदर, हर एक बॉडी में, हर एक के अंदर बॉडी में नए सेल्स 21 दिन में फिर से तैयार हो जाते हैं। पूरा नया एक सिस्टम तैयार हो जाता है। एवरी 21 डेज वी कंप्लीट 1 होम्योस्टेसिस साइकिल। 3 होम्योस्टेसिस साइकिल जाएंगे ना, तब आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा। जैसे बोलते हैं ना, मराठी में एक कहावत है, तूप खल्ल्या खल्ल्या रूप येत नहीं, है ना। एक दिन आपने अगर घी खा लिया तो बस उससे आपका चेहरा मोहरा बदल जाएगा, ऐसा होता है क्या? आपको कहीं दिन तक इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी समय उसी तरीके से आप वर्कआउट अगर चालू करोगे तो उसका इफेक्ट आपको 8 हफ्ते के बाद, यानी 63 डेज, यानी 2 मंथ्स के बाद आपको इसका इम्पैक्ट चालू हो। एटलीस्ट 3 होम्योस्टैसिस साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस या इसका इफेक्ट समझ में आएगा। तो ये मैं नहीं कर रहा कि आज एक्सरसाइज करो तो ये सब चेंज हो जाएगा। ये इसके लिए काफी समय लगता है, काफी साधना लगती है। जैसे हमने ईगल को देखा वैसी साधना भी लगती है। तो ये साधना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट इज योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या आता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब क्या है? न्यूरॉन का जो नेटवर्किंग है ना, वो काफी बढ़ जाता है आपका वर्कआउट से। देखिए, एक छोटा सा रिसर्च मैंने पढ़ा है कि आपको ना, हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को 3.5 साल की उम्र में ना स्कूल में दाखला दे देते हैं। तो 3.5 साल की उम्र से वो 8 साल तक जो भी पढ़ता है ना, बात समझिए मेरी, मैं एक रिसर्च की बात कोट कर रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, एक रिसर्च हुआ है। तो कहा गया है कि फ्रॉम द मतलब उसका बर्थ जब होता है वहां से 8 साल तक उसको कोई चीज पढ़ानी नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं, ABCD नहीं, रिंगा रिंगा रोजेस नहीं, जिंगल बेल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं पढ़ाना है ना। उसको क्या करना है? सब चीजों से खेलने लगाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल, डिफरेंट साइजेस ऑफ बॉल, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हर चीज से उसको वाफी जितना हो सकता है उसको एक्सपोजर दो। इससे क्या होता है पता है? 8 साल की उम्र तक ना उसके ब्रेन में नेटवर्किंग जो रहता है, वो काफी सारा नेटवर्किंग हो जाता है, न्यूरॉन्स का नेटवर्किंग। अब तुम बहुत अर्ली उसको स्टार्ट कर दोगे ना पढ़ाना लिखाना, जो बच्चा 3.5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल होता है, उसकी जो इम्प्रूवमेंट 8 साल तक रहती है। आप क्या करो, 8 साल तक कुछ मत दो, 8 साल की उम्र में उसको स्कूल में दाखला दो। 8 साल से 9 साल की उम्र में वो जो सीखेगा ना, ये बच्चा जो 3.5 साल से 9 साल तक की उम्र में सीखेगा ना, उससे दुगना सीख जाएगा। कैन यू इमेजिन? आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं? कि 1 साल में वो 3.5 साल से 9 साल में जो सीखता है वो 1 साल में सीख सकता है। इतना न्यूरल ये नेटवर्किंग उसका बड़ा हुआ रहता है। इसीलिए क्या करो कि जितना ज्यादा एक्सपोजर हो सकता है चीजों से, टेम्परेचर से, जितने ज्यादा वेरिएशंस में उसको खिला सकते हो तो उसको आपको करवाना है। ये एक रिसर्च की बात कर रहा हूँ, ये कोट कर रहा हूँ। तो वैसे ही हम लोग जब वर्कआउट वगैरह करेंगे ना, तो अपना न्यूरल ये जो रहता है क्या नेटवर्किंग, वो काफी सारा बढ़ता है। आप बहुत सारी चीजों से, जैसे पार्किंसंस, जैसे शिवरिंग होता है ना हमारे अंदर थोड़ा एजिंग होने के बाद, तो वो उससे बच सकते हो। अल्जाइमर, बहुत लोग एजिंग में हम लोगों को देखने को मतलब भूल जाते हैं कुछ चीजें, तो उससे भी आप बच सकते हो। क्योंकि ये सब चीजें आपको क्या करती है, आपका फंक्शनिंग प्रॉपर करवाती है। मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो फंक्शनिंग अच्छा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ, ये आपका चॉइस है, ये चॉइस को आप पकड़िए, ये चॉइस को आप कीजिए, तो ये बहुत सारी चीजों का फायदा होगा भाई। देखो, कुछ भी नहीं करना है आपको ना, एक पिक्चर को जाना है तो 1,000 रुपया खर्चा करना है। 2 लोग अगर जाएंगे तो बहुत सारा ये रहता है, कॉम्बो पैक रहता है, उसके अंदर इंटरवल के दौरान कुछ कोक मिल जाता है, कुछ पॉपकॉर्न मिल जाता है वगैरह, उसके तहत से वो 1,000 रुपया खर्चा करते हैं। और क्या करते हैं कि अंधेरे में जाके रोते हैं, अपना रुमाल गीला करते हैं, आंख पोंछते हैं, नाक पोंछते हैं, उसके लिए 1,000 रुपये दे रहे हो आप। अच्छा जाने दो, चलो हम लोग कॉमेडी पिक्चर देखने गए, अंधेरा होता है, फिर उसमें हंस लेते हो, बहुत जम से हंस लेते हो, हंसने के लिए फिर 1,000 रुपये देना है? क्यों कर रहे हो भाई? मैं सोचता हूँ आधा घंटा आप स्पोर्ट्स खेलो ना, फुकट में है। ये सब चीजें कर सकते हो आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन रोते हैं, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन गाली गलौज करते हैं, ऐसा आप बाहर नहीं कर सकते। भैया आप बाहर करोगे ना ऐसी चीजें तो बहुत मार खाओगे। गाली गलौज कर सकते हैं आप बाहर ऐसे, बहुत फ्रीली ये कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इज अ फील्ड वेयर यू हैव मैक्सिमम कैथारसिस, मैक्सिमम साइकोलॉजिकल वेंटिलेशन। आप सबसे इन सब चीजों से आप बाहर आ सकते हो। आपको रोने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है, ये कितनी मतलब खुददारी की बात है या गम की बात है मुझे नहीं पता।
कि उसके लिए पैसा देना पड़ता है रोने के लिए और हंसने के लिए। यार ये तो फ्री है। मैं तो सभी से कहूंगा, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, फिर से यही कर रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग फील्ड पे एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने लिए निकालें। दुनिया भर के लिए हम लोग टाइम निकालते हैं, सबके लिए हम लोग सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, अपने लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, अपनी बॉडी को थोड़ा एक्सर्शन करना है। और थोड़ा सा हाफ एन आवर, मैं बस बहुत ज्यादा नहीं, तो 23 साढ़े 23 घंटे जो बाकी है ना वो बहुत अच्छे गुजरेंगे आपके। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप खेलोगे कूदोगे ना तो मूड एक मैं अभी एक ये सुन रहा था, जैसे आप सोचते हो ना कि मुझे भाई कल से एक्सरसाइज करना है वगैरह, तो एक ना ब्रेन में एक ये रिलीज होता है, उसको डोपामाइन बोलते हैं। वो ना एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है डोपामाइन। और जैसे आप खेलने चालू करते हैं ना तो एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं। तो 7 से 8 घंटे ना हैप्पी हॉर्मोन्स रहते हैं, वो प्लेजर लाते हैं आपको। आप एक्सरसाइज करते हैं ना उसके बाद 7 से 8 घंटे आपके साथ वो एंडोर्फिन रहते हैं। ऐसे आप 2 4 महीने करते रहोगे ना तो सेरोटोनिन निकलेगा, वो क्या करेगा आपको वेल बीइंग का एक ये देगा। मतलब आप 7 से 8 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको खुशहाली लगती है, वेल बीइंग का एक एहसास देगा, वो सेरोटोनिन देगा। और ऐसे ही आप बरकरार रखते हो ना तो ये रहता है ना, इसको क्या कहते हैं, हम्म, कुछ एक हार्मोन है जो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, सेल्फ लव प्रोड्यूस करता है, हम अपने आप को चाहने लगते हैं। तो मैं सोचता हूँ यार डोपामाइन, एंडोर्फिन, सर्टोनिन और तुम्हारा ऑक्सीटोसिन अगर ये सिक्रीट हो रहा है कुछ एक्सरसाइजेस से तो ये कितनी अच्छी बात है। तो मैं सोचता हूँ ये आपने करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। डेफिनेटली एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके किडनीज वगैरह आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से वेस्ट रिमूवल करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, स्किन से वगैरह। एक एक 2 मिनट में मैं खत्म करता हूँ मैडम, विद इन 2 मिनट्स आई जस्ट स्टॉप हियर, आई हैव मोर थिंग्स टू गो। बट 2 मिनट स्टॉप करते हैं, आपको एक ग्लूकोज का एक छोटा सा डोज जरूरी है ऐसे मुझे लगता है आप सभी को। क्योंकि क्या है कि आपके ना सबसे ज्यादा वेस्ट ये सेल्स कौन से है पता, मैंने पहले सेल की बात की, तो सबसे वेस्ट सेल कौन से हैं, जो 10 बिलियन सेल्स है हमारे ब्रेन में, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ खाते और आराम करते हैं। तो उनको ना बहुत ज्यादा ग्लूकोज लगता है। जब हम लोग दिमाग की बात करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। तो मैं सोचता हूँ 1.5 घंटे के बाद अपना रिसेप्टिविटी भी कम होता है। इतना तो मैं सोच ही सकता हूँ आपके बारे में। तो ठीक है, विल स्टॉप हियर, विल स्टार्ट विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम अगेन। Yes. If you have any questions, shall we consider now or after the lecture? After the lecture, you can consider, sir. या फाइन, एवरीबडी जस्ट कीप अ नोट, नोट कर लो। हम लोग लास्ट हाफ एन आवर सेशन है ना हमारे क्वेश्चन आंसर्स के तहत करेंगे काम, ठीक है। Yes, sir. तो मैं शायद पहले इंग्लिश में थोड़ा सा बात कर चुका, तो मैं माफी चाहता हूँ जिनको थोड़ा नहीं सर, समझ कोई में नहीं प्रॉब्लम है। नहीं सर, वी कैन हाँ? अंडरस्टैंड सर। ठीक है, इफ यू वुड हैव सेड ना कि हिंदी में बात करना है तो आई वुड हैव नहीं कंटिन्यूड सर, विद मिक्स एनीवे। स्टूडेंट्स है ना, तो इंग्लिश हिंदी मिक्स दोनों भी हाँ ठीक ठीक कोई ठीक। प्रॉब्लम नहीं सर। ओके मैम, थैंक यस, यू। सो विल हैव अ ब्रेक फॉर 10 minutes, यस, आई विल बी here only. Okay. Thank you very यस, much. Yeah. थैंक यू सर। Thank you.
last period
Shall we start, ma'am? Yes, sir, we can start, sir. Yeah. Thank you very much for joining again. Are you fresh now? Yes, sir, it is very interesting lecture. Yeah, thank you, ma'am. Thank you very much. We like ठीक it a lot, sir. जी, किसी के माइक चालू है 39 नंबर प्लीज। Sir, I will manage, don't worry, sir. ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जहाँ पे हम लोग किडनीज की बात करते हैं। तो बेस्ट वेस्ट रिमूवल हो जाता है। जितने भी टॉक्सिन्स है वो अगर रिमूव हो जाएंगे तो अपने को दिन भर फ्रेश लगेगा। काफी सारा चीजें जो रहती है वो बेसिकली टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से होते हैं। बहुत बार हम लोग डिजीनेस फील करते हैं या फिर पेन फील करते हैं बॉडी में। दिस इज बिकॉज ऑफ अननोइंगली टॉक्सिन्स अंदर जमा होते हैं, अच्छा फिल्ट्रेशन नहीं होता, उस वजह से होता है। दूसरी बात, जब हम वर्कआउट करते हैं तो
किडनी स्टोन जैसे प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली कम अपने को, ये मैं नहीं कहता कि पूरे ये जाएंगे, क्योंकि किडनी स्टोन इज अ प्रॉब्लम लाइक इट्स अ बॉडी टेंडेंसी टू डिपॉजिट कैल्शियम ज्यादातर दे। तो वो क्या होता है कि कुछ बॉडी में ऐसा टेंडेंसी है जहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट कर लेता है, तो वहाँ पे किडनी स्टोन्स होते हैं। पर बहुत बार ऐसे देखा है कि ये स्पोर्ट्स में अंदर कम मात्रा में ये आपको दिखाई देंगे, या फिर वर्कआउट जो करते हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनमें कम मात्रा में दिखा। नेक्स्ट, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी वगैरह जो है, ग्रोथ हार्मोन्स का रिलीज है, वो बहुत अच्छा फंक्शनिंग करता है। मैं कह रहा हूँ कि इस उम्र में हम लोग क्या करेंगे, बहुत से लोगों का ऐसा सोचना रहता है कि इस उम्र में क्या करेंगे। उम्र सिर्फ, आई थिंक इट इज नंबर, राइट। तो हम लोगों ने भी सोच ऐसी रखनी की चाहिए कि दिस इज अबाउट द नंबर्स, नॉट विथ व्हाट यू कॉल एजिंग हो गया तो हम लोग, हमारी सोच ही बूढ़ी हो गई है, हम नहीं बूढ़े हो गए, और सोच की वजह से हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सोच अपनी जवान रखनी है, सोच अपनी यंग रखनी है, तो हम लोग शायद ही ऐसे रहेंगे कि मैं अब थोड़ा सा मेरे खुद के बारे में कहूँगा। At the age of 54, 55, I get up at 4 o'clock in the morning. My routine ends up at 10:30 in the evening, right? So every day I walk around 14 kilometers. I do my pranayama. I give myself at least 2.5 hours every day for my exercises. Okay. As I am from basically say sports field, so it is not a problem for me. But for those who are not into the sports, can at least give 1 hour a day. ओके। नेक्स्ट, एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अपना इम्यून सिस्टम जो है, जिसके वजह से हम लोग बहुत पीड़ित रहते हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई आगे वाला खांस लेता है तो इमीडिएटली हम लोग शाम में खांसने लग जाते हैं। आगे वाले को सर्दी हो गया, कोल्ड वगैरह है, तो इमीडिएट हमको भी पकड़ लेता है। तो ये जो इम्यून सिस्टम है अपना बूस्ट होता है, बेसिकली वाइट सेल्स जो है आपके एफिशिएंटली काम करने लगते हैं। मैंने जैसे कहा कि टॉक्सिन्स अगर रिलीज हो जाएंगे बॉडी में के, तो बहुत सी अपनी जो व्याधियां हैं या कहेंगे मुश्किलात है, वो अपने निकल जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्किन एंड थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम। बहुत सा हमने देखा है कि उम्र के पहले झुर्रियां पड़ने लग जाती है ना, तो स्किन में स्ट्रेचेबिलिटी नहीं रहती, एक बेसिकली इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। तो हम लोगों में क्या हो जाता है, शायद अभी कोई छींका नहीं है, लेकिन मैडम को छींक आ गई, पता नहीं क्या, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा काम कर गया है ऐसे लगता है। ठीक है, एनीवे। तो यहाँ पे क्या है कि थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो हमारा हाइपोथैलेमस है, तो थर्मो रेगुलेशन करता है टेम्परेचर। हम लोग जैसे कहते हैं ना, योग में हम लोग नाड़ी शोधन वगैरह करते हैं, जैसे सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, इससे जो काम करते हैं ना हम लोग, तो दैट एक्चुअली वी स्टिमुलेट अवर थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम। जो हाइपोथैलेमस है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा स्किन में से जितना स्वेट जाएगा वगैरह, स्किन को ग्लो उतना आता है, झुर्रियाँ कम पड़ने लगती है, और ये सब चीज़ों से हम लोग दूर रहने लगते हैं। इट रिड्यूसेस हीट रिलेटेड इलनेस जो है, इससे भी हम लोग दूर रहने लगते हैं। सो दीज आर सम इफेक्ट्स। 10 सिस्टम्स मैंने लिया है, वैसे काफी सिस्टम्स पे काम करता है, ये तो सिर्फ बॉडीली सिस्टम्स है। मैंने अभी माइंड सिस्टम के ऊपर आपको बताया नहीं है, तो वो मैं सिर्फ एक लिस्ट आउट करूंगा, बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा उसके अंदर, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें हैं कि अगर बोलने लग जाऊंगा तो शाम तक भी खत्म शायद ना हो। तो मुझे समय जो दिया है उसमें मुझे सीमित करना है, तो इसी वजह से मैं जस्ट ना रीड डाउन करता हूँ जो दिमाग के ऊपर इफेक्ट होता है, मतलब मेंटल सिस्टम इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकली हम लोग उसमें कितने एफिशिएंट बनते हैं। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि वेल बीइंग का ये आता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है कि मल्टीपल बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं, मेंटल बेनिफिट्स हो जाते हैं उसके अंदर, वेल राउंडेड सिस्टम अपना पूरा एफिशिएंटली काम करता है। अभी मैं ना एक दिन अपना एक आर्टिकल लिखने बैठ गया, तो उसमें मैंने एक सोचा कि स्पोर्ट्समैन के अंदर जो दीवारों के बीच में बैठ के, चार दीवारी के बीच में जो पढ़ता है, उसके अंदर तो क्वालिटीज डेवलप होती है यकीनन, लेकिन जो चार दीवारी छोड़ के जो बाहर काम करता है ना, तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज डेवलप है, जैसे स्पोर्ट्समैन के अंदर क्या क्वालिटीज। तो मैंने सोचा कि ए से चालू करते हैं जेड तक, अपने को जितने अल्फाबेट्स मालूम है ना, ए से जेड, मुझे तो इतना ही पता है, डायलेक्टिक्स छोड़ के, बाकी के जो 14 है वो डायलेक्टिक्स वो छोड़ के, मैं सोचता हूँ ए से जेड तक मुझे पता है। तो उसके अंदर उसके तहत मुझे जो ध्यान में आता है, तो ये मुझे ध्यान में आए सो चीजें हैं जिसके तहत मैं बात करूंगा आपको। तो कुछ क्वालिटीज जो है ना, ए से चालू की है। तो मैंने स्पोर्ट्समैन की क्वालिटीज को नापा है, तो मैं एक आर्टिकल लिखने बैठ गया। तो मैं सोचता था कि ये 2 पेपर में खत्म हो जाएगा, 3 पेपर में, चलते चलते ना पेपर लग गए मुझे, 8
स्कूल्स के पेजेस में मैंने ये आर्टिकल कंप्लीट किया। तो क्वालिटीज अभी इसके अलावा हो सकती है, लेकिन मुझे जो जहन में आई, मुझे जो ध्यान में आई, वो क्वालिटीज मैं आपको यहाँ पे बयान करूंगा, यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। पहली तो बात है एडजस्टमेंट आता है। जहाँ पे टीम स्पोर्ट्स वगैरह होता है ना, तो टीम पार्टनर को, टीम इसको समझने में, कैप्टन को बाकी के लोगों को समझने में, और बाकी के लोगों को कैप्टन को समझने में, ये जो एडजस्टमेंट रहता है ना, या फिर गेम सिचुएशंस को कैसे एडजस्ट करना है, ये पहली क्वालिटी डेवलप होती है। वैसे ही मैंने ना सिर्फ मैं आपको लिस्ट डाउन करूँ कि ये 3 चलती है, ये सिर्फ लिस्ट की स्लाइड्स है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि साइकोलॉजिकल क्वालिटीज है, मैंने बॉडी के क्वालिटीज पे बात किया। तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, चांस की नहीं, चॉइस की बात कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि कोई एक गेम अगर चयन करते हो ना, मैं बोलता हूं कि आप समझो, फर्ज करो कि आप ज्यादा उम्र हो गया ऐसा लगता है, और आपको स्पोर्ट्स अभी नहीं करना है। अभी ऐसे है कि मास्टर स्पोर्ट्स भी होते हैं, मतलब जो एजेड है ना, उनके लिए भी स्पोर्ट्स होते हैं। अगर आप चाहो तो आज भी चालू कर सकते हो, नेवर लेट है ना, कभी भी लेट नहीं होता, आज भी चालू कर सकते हैं। तो देखिए क्वालिटीज क्या डेवलप होती है। पहला तो एडजस्टमेंट होता है। एग्रेशन है ना, एग्रेशन सभी में होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन में भी होता है। एग्रेशन के बगैर काम नहीं होता, लेकिन ना इट शुड बी ऑप्टिमाइज, इट शुड नॉट बी एग्जैगरेटिंग, इट शुड नॉट बी लोअर। मतलब कम एग्रेशन भी काम नहीं करता, कम अराउजल जैसे काम नहीं करता स्पोर्ट्स के अंदर, वैसे ऑप्टिमम अराउजल है, वैसे ऑप्टिमम एग्रेशन, एग्रेशन को भी कंट्रोल करता है स्पोर्ट्समैन। नेक्स्ट उसका एडेप्टेबिलिटी, एक्लेमेटाइजेशन, मतलब क्लाइमेट से भी एक्लेमेटाइज करता है, लोगों से भी वो एक्लेमेटाइज, उसको एडेप्टेशन बोलेंगे हम, उसके साथ अडेप्ट हो जाता है। एंग्जाइटी कंट्रोल कर सकता है स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के तहत ना, उसके बहुत से मैचेस में उसको बहुत सारा एंग्जाइटी रहता है, तो उसको भी कंट्रोल करने को सीखता है। दूसरा ने जब बहुत अच्छा एक आधा सिक्स लगाया या एक आधा बहुत अच्छा कैच लिया ना, तो अपोनेंट भी उसकी तारीफ करता है, जो दूसरा है ना। तो ये जो अप्रिशिएशन सेंस है ना, ये आम आदमी में कम देखा गया है। दूसरा कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो ये इसको तो बाहर मुंह से दिखाएगा, बोलेगा भी बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से उसकी ना ऐसी गांठ पड़ी रहेगी। आप सोचिए, ऐसे होता है ना, दिस इज जस्ट इगोइस्टिक प्रॉब्लम। तो ये स्पोर्ट्समैन के अंदर हमने बहुत कम देखा है। तो ये जो होता है ना, उसके अप्रिसिएशन ना, बहुत दिल से अप्रिशिएट करता है। कोई एक आधा बहुत अच्छा स्किल कर जाता है, तो वो बहुत दिल से अप्रिशिएट करता है। आपने शायद बाकी कुछ नहीं तो क्रिकेट तो देखा होगा, क्रिकेट में भी देखिए कि अपोनेंट टीम है, तब भी वो उसको क्लैप करेगा कि बहुत अच्छा कैच लिया, या बहुत अच्छा ये किया, या बल्लेबाजी बहुत अच्छी की। तो ये जो चीज है, ये सिर्फ हमने स्पोर्ट्समैन के अंदर देखे है। और मैं सोचता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, मैं छोड़ के आम लोगों के अंदर की तारीफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट अराउजल लेवल जो है, इन्वर्टेड यू कहते हैं हम लोग, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। अराउजल जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, वो जो मैक्सिमम भी काम नहीं आता, वो मिनिमम भी काम नहीं आता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ काम करने में स्ट्रेस जरूरी है, तो यू स्ट्रेस चाहिए या डिस्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेस का लेवल चाहिए। स्ट्रेस थोड़ा होना अच्छी बात है, पूरा ही रिलक्टेंट हो जाएंगे ना, तो टाइम पे पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझे बोला आपने कि 11 बजे लेक्चर चालू करना है, और मैं चलो यार ठीक है करते हैं, तो मैं 11:30 बजे पहुंच जाता हूँ। मतलब दैट क्वालिटी ऑफ, थोड़ा तो एंग्जाइटी, थोड़ा अराउजल लेवल, ये जो है ना, इट शुड बी ऑप्टिमम, इट शुड नॉट बी मैक्सिमम। मैक्सिमम विल स्पॉइल, मिनिमम विल नॉट अलाउ यू टू स्टैंड देयर। ओके, जो दोनों चीजों के बीच में, तो ये अराउजल लेवल भी कंट्रोल करता है। बिलोंगिंगनेस सेंस है, जो टीम में रहता है, ये काफी जरूरी है। टीम में एक आधा गोल करता है आदमी, लेकिन टीम जीतता है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के जो 11 लोग थे, 9 लोग थे, 10 लोग थे टीम नहीं, मेंबर नहीं है तो ठीक है। निकम, ये नहीं है। वो लोगों के सहायता से अपना टीम में गोल बनता है। तो एक ही गोल या दो गोल बनता है, आदमी बनाने वाला एक या दो है, लेकिन टीम में जो बिलोंगिंगनेस है ना, कि भाई वो गोल मारेगा, वो फॉरवर्ड में है, तो वो गोल मार सकते हो, उसको पास मैंने देना चाहिए, तो वो गोल मारेगा तो उसका नाम होगा और मेरा नहीं होगा। ये जो चीज है ना, ये वहां पे कम दिखाई देने लगती है। बाउंसिंग बैक, जब आप हार जाते हो, मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। 93-94 में मैं एनआईएस करने गया था पटियाला में, 1 साल का डिप्लोमा होता है हमारा कोचिंग का। वो 4 ही जगह होता है इंडिया में कोचिंग डिप्लोमा, पटियाला में, बैंगलोर में, साउथ सेंटर बैंगलोर में है, ईस्टर्न कोलकाता में है, और वेस्टर्न गांधीनगर में है। तो 4 जगह हमारे डिप्लोमाज होते हैं वो। और वहाँ पे भी काफी कम ये रहते हैं तो कैंडिडेट्स उसके लिए। तो कभी 12, कभी 15, इतने ही साल भर में कोच बन के निकलते हैं। तो वहां पे हमने देखा कि वहां पे हमारे को पढ़ाने को एक हमारे हॉकी टीम बहुत प्रोमिनेंट है, हॉकी का परफॉर्मेंस है। तो वहां पे उनके साथ ना डॉक्टर खान करके साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एक वाकया सुनाया, मैं आपको वो शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि मैं ओलंपिक गया था,
तो बात ऐसी होती है कि बाउंसिंग बैक की बात बता रहा हूँ, तो ओलंपिक गया था तो रशियन टीम ना, विमेन टीम, वो पहले दिन हार चुका था, तो अभी उसका कोई चांस नहीं था, वो राउंड रॉबिन नहीं था, तो नॉकआउट सिस्टम में था, पहले नॉकआउट सिस्टम में होता है क्वार्टर फाइनल तक, तो वो नॉकआउट सिस्टम में वो हार गया। अभी क्या होता है कि मेन जो स्टेडियम रहता है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मशियर्स, कोचेस वगैरह, टेक्निकल जो मेंबर बैठते हैं, उनका एक गैलरी होता है, उनका एक ये होता है, तो वहां पे बैठे हुए थे। वहां से पीछे जो दूसरे स्टेडियम्स रहते हैं ना, वो प्रैक्टिस स्टेडियम्स रहते हैं लग के, जहाँ पे ओलंपिक्स होता है, ये ऐसा रहता है। तो वहां पे वो गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही है। कौन? जो पहले दिन हार गई, रशियन गर्ल्स। और उनके साथ कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा है रशिया का, तो वो पूछता है कि ये तो लड़कियां हार गई एंड देर इज नो चांस कि क्या वो कहेंगे उसको, कि ये अगला उनका कोई मैच है ऐसा तो है नहीं, तो ये रेस्ट कर सकती है ना। तो उसने क्या बोलना चाहिए कि ये जो बाउंसिंग बैक ये जो है ना, तो ये कैसे रहता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। कि वो बोल रहा था कि दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक्स। कैन यू इमेजिन? अगेन इट इज आफ्टर 4 years। तो उसके लिए वो एक दिन भी ना गवाते हुए वो प्रैक्टिस कर रहे। सी द माइंड स्टेट, मतलब आप हार चुके हो, ये सब हो चुके के बाद वो बाउंसिंग बैक जो कैपेसिटी है ना, वो स्पोर्ट्समैन के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसको एवरी डे प्रैक्टिस। मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें फिर से ऐड करने चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपका। बात ऐसी है कि 1 साल का जो फिटनेस है ना, आपको अगर इसको गंवाना है ना, मतलब ये करना है ना, तो 15 दिन रेस्ट करना है आपको। सिर्फ 15 दिन नहीं करना है कुछ। आपने जो 1 साल में कमाया ना, वो 15 दिन में आप 1 महीने में गंवा दोगे। सो दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। इसलिए मैं बोलता हूँ, पैसा कमाने के लिए 1 महीना लगता है, गमाने के लिए 1 तारीख के बाद 2 तारीख में पैसा खत्म हो जाता है ना। महीना भर का आपका वर्कआउट, एक सैलरी मिलेगा, है ना। कमाने के लिए बहुत समय लगता है, गमाने के लिए कुछ नहीं लगता। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी मैटर्स हियर। आपका रेगुलर जो पन है वो मैटर करता है। नाउ कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है, मैं बोलता हूँ। हारने के बाद भी बढ़ता है और जीतने के बाद भी बढ़ता है, हारने के बाद भी बढ़ता है स्पोर्ट्स के अंदर। मैं एक ना छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबडी, बट द डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन आई वुड लाइक टू स्टेट ओवर हियर। बहुत ये कि मैं एक अंडरलाइन करता हूँ एक चीज से, एक चीज, स्पोर्ट्स प्रोड्यूसेस मैक्सिमम लूजर्स, ये मेरा कहना है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ ये सेंटेंस को। स्पोर्ट्स प्रोड्यूसेस मैक्सिमम लूजर्स। मैं एक छोटा सा वाकया बता देता हूँ। एग्जामिनेशन के लिए एक क्लासरूम के अंदर 60 लोग बैठे हुए, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, 60 लोग बैठे हुए, 60 लोग डिस्टिंक्शन में आ सकते हैं। 60 कैन कम इन डिस्टिंक्शन, गेट स्कोरिंग 80% एंड अबव मार्क्स, ओके। बट इन कॉम्पिटिशन, नो, if there are 3 participants, we have got 3 medals. If 30 participants, 3 medals. 300 participants, 3 medals. And 3,000 participants, again 3 medals. Now the thing is that 300 बच्चे हैं और 3 ही मेडल है, तो 297 क्या है? नाकामयाब है। फोर्थ आया वही स्टेज में है, और 300 तो जो भी है वो भी वही स्टेज में है। मतलब स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम लूजर्स, ये अंडरलाइन है, ये सबसे बड़ी बात है। तो एक क्लासरूम, एक एग्जामिनेशन और स्पोर्ट्स में यही फर्क है कि स्पोर्ट्स में सिर्फ 3 ही मेडल रहते हैं, और 3 मेडल के लिए फाइट करना है। जो ये 3 मेडल नहीं जीतता ना, उसको नाकामयाब बोला जाता है। जो फोर्थ है उसको भी, और जो 100th है उसको भी नाकामयाब। दो सेम टाइटल गोज विद द फोर्थ एंड द 100th। नाउ ट्राई टू थिंक, ये कितना माइंडसेट कितना पक्का होना चाहिए इसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है, मैं सोचता हूँ। इसमें डेफिनेटली क्रिटिसिज्म, एक्सेप्टेंस एबिलिटी, आपने देखा होगा बहुत बार, अगर टीम खराब खेलता है, टीम जब खेलता है ना, तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ऑडियंस ऐसे कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड जो ऑडियंस होता है ना, वो टीम के साथ जहां भी टीम जाता है वहां पे जाता ही है। और उनको क्या है कि अपना टीम जिताना है, जीतना चाहिए, ऐसा उनका ख्याल है। जो खेलता है उसको पता है एक्चुअली क्या रहता है वहां पे, स्ट्रेस लेवल क्या रहता है, कैसे खेला जाता है। लेकिन टीम मेंबर जो सपोर्ट करते हैं ना, फैन फैन क्लब जो बोलते हैं, फैंस हम लोग, तो उसमें ऑर्गेनाइज जो रहते हैं ना, वो काफी खूंखार रहते हैं। खूंखार है इसका मतलब उनको ऐसा रहता है कि हमारा टीम जीतना चाहिए, हम उसका हार मान नहीं सकते। स्पोर्ट्समैन मान्य करता है हार, लेकिन अपना जो फैन है ना वो नहीं करता। तो इसमें क्या होता है कि क्रिटिसिज्म बहुत होता है। अभी एक मैच में अपना गांगुली ने नहीं खेला, लोग कितनी सारी बातें कहते हैं। खेलता है तो बहुत सारी तारीफ होती है, जब नहीं खेलता ना तो बहुत सारी उसके लिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। ये बहुत चीज है और ये सस्टेनेबल है। अभी समझो एक बार क्रिटिसाइज हो गया और छोड़ दिया उसने, खेलना ही छोड़ दिया, ये कैसी बात है?
तो ये नहीं रहता स्पोर्ट्समैन के अंदर, वो फिर बाउंसिंग बैक करता है। कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 3D फॉर्मूला होना चाहिए, जैसे डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, दिस इज 3D फॉर्मूला फॉर सक्सेस। हम लोग स्पोर्ट्स में हर बार कहते हैं ये कि 3D ना अपने साथ ले चलो, एक डिसिप्लिन, एक डिटर्मिनेशन और एक डेडिकेशन, ये दो तीन तीन चीजें है ना बहुत जरूरी है, तो अपने साथ ले चलो। ये मैंने फिर इधर लिखा है कैथारसिस और साइकोलॉजिकल वेंटिलेशन। इसके पहले मैंने बताया कि किस तरीके से अपना कैथारसिस होता है, मतलब साइकोलॉजिकल वेंटिलेशन कैसे होता है, इसके बारे में देखो। अभी डी पे आ गए हम लोग, ए से चालू किया था, डी पे आए हम लोग। डाइजेस्ट डिफीट, डिफीट को डाइजेस्ट करता है। बहुत सा बार देखा है एग्जामिनेशन में फेल हो गया या नीट में नंबर नहीं आया तो फांसी लगा लिया, पॉइजन खा लिया। व्हाट इज दिस? दिस जस्ट ब्लंडर। ओके, लाइफ एक ही बार मिलती है, चांस अनेक बार मिलते हैं, है ना। ये लाइफ में जो चांसेस है ना एग्जाम देने के वगैरह, अनेक बार मिलते हैं, लाइफ एक ही बार मिलता है, तो वही खत्म कर दिया तो चांस बाकी का कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। तो बात ऐसी है कि डिफीट डाइजेस्ट करना आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जब आप किसी बच्चों को खिलवाओगे तो पहली बात वो सीखता है कि डाइजेस्ट डिफीट। ओके, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, एक स्पर्ट ऑफ अ मूवमेंट रहता है, जैसे बॉलर कर रहा है 140 किलोमीटर स्पीड से, वो बॉलिंग करता है, वो कहाँ उसका बाउंस होगा, कहाँ बॉल टर्न होगा, इसका एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो डिसीजन लेता है, और उसको कहाँ मारना है वो प्लेयर भी देखता है कि कहाँ मारनेगा, वहां कैच नहीं जाएगा, वहां बाउंड्री पे जाएगा बॉल, इसकी वो कोशिश करता है। इसका डिसीजन कितना होता है? जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डिसीजंस होते हैं। सो अनएक्सपेक्टेड थिंग, अनएंटिसिपेटेड थिंग्स सामने आते हैं, उसके डिसीजन लेता है। सो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसके अंदर बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन डेफिनेटली मैंने बोला, जैसा डेडिकेशन मैंने बोला। फाइटिंग एंड स्पोर्टिंग स्पिरिट, फिर से करना, बाउंसिंग बैक कैपेसिटी, फोकस, एबिलिटी टू फोकस ऑन समथिंग, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था हमारे सीए का, तो फोकस क्या किया था, बैडमिंटन के शटल कॉक पे फोकस किया था। तो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेशियसनेस उसको बोला जाता है, स्पोर्ट्समैन एग्जिबिट्स ग्रेशियस, व्हाट यू कॉल, मॉडेस्टी इन विक्ट्री एंड ग्रेशियसनेस इन डिफीट। सो दिस इज सम गुड क्वालिटी। ओके, मॉडेस्ट इन विक्ट्री, जीतता है तो हारने वाली टीम को बहुत ज्यादा ये नहीं करता, वो भी वहां अपना ना मॉडेस्टी दिखाता है। और डिफीट हो गया सो वो ग्रेशियसनेस दिखाता है उसके अंदर। तो इस ऐसा बोला जाता है ना, विनिंग मेक्स लूजिंग वर्थवाइल, है ना, या लूजिंग मेक्स विनिंग वर्थवाइल। इट इज लूजिंग मेक्स विनिंग वर्थवाइल। आप जीते हो ना तो किसी के हार की वजह से जीतो, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो अपने को हम लोग बहुत बाद में सीखते हैं, लेकिन ये सीखना पहले जरूरी है, ऐसा मैं सोचता हूँ। देन गोल सेटर रहते हैं, डेफिनेटली गोल सेटिंग रहता है। जैसे हम लोग ना एक कंसेप्चुअल प्लान रहता है तो 12 ईयर्स का रहता है। देन ओलंपिक प्लान रहता है, 4 ईयर्स का रहता है। देन ईयरली प्लान रहता है, वो 1 ईयर का। देन वी हैव गॉट मेजो प्लान, दैट इज मंथली प्लान। देन वी हैव गॉट वीकली प्लान और डेली प्लान। डेली प्लान के अंदर फिर सेशन प्लान रहता है, मॉर्निंग सेशन प्लान, इवनिंग। तो वहां पे ना गोल सेटिंग किया हुआ रहता है, कौन से इसमें कहाँ का ये करना है। ह्यूमिलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज डेफिनेटली डेवलप होते हैं, वो मोटिवेटेड रहता है। उसमें मेडिटेशन होता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है, परफेक्शनिस्ट रहता है। देन स्ट्रेस मैनेजर है, टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत बढ़ता है, वो प्रोसेस के अंदर उसको ट्रस्ट है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी है, रेजिलेंस है, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड एटीट्यूड रहता है, और किलिंग इंस्टिंक्ट भी रहता है, क्योंकि जब मैच वगैरह खेलते हो ना तो आपको ये सब चीज एग्जिबिट करनी पड़ती है, नहीं भी हो अंदर तब भी एग्जिबिट करनी पड़ती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर सामने की टीम पे लाना पड़ता है जीतने के लिए वगैरह, तो ये भी करता है। देन ओपन टू क्रिटिसिज्म, मैंने जैसे बोला। सो दीज आर फ्यू क्वालिटीज विच आई कुड एनलिस्ट व्हेन आई, मैंने जब मैं बैठ के सोच रहा था कि क्या क्वालिटीज, तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। शायद इसके अलावा भी कुछ क्वालिटीज होंगे जिसके बारे में मुझे नहीं ज्ञात आया। तो मैं सोचता हूँ इतने तो क्वालिटीज है जो स्पोर्ट्समैन के अंदर डेवलप होते हैं स्पोर्ट्स खेलने से। एक छोटा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, उसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे। एक मैंने ना एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि डू यू हैव 10 AM इफेक्ट एट 6 PM। तो बहुत सारे ना यहाँ पे हम लोग जो है, तो टीचिंग फैकल्टी में से ही है सब, तो 7 से 8 घंटा हम लोग काम करते हैं। तो जैसे सवेरे 10 बजे आते हैं ना हम लोग ऑफिस में, तो बहुत ताजे रहते हैं। शाम में 6 बजे निकलते समय हमारे अंदर काफी लेथार्जी आता है। तो इसके तहत ना हमने क्या किया था कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया था 3 मिनट्स का। एवरी आवर यू नीड टू गिव 3 मिनट्स फॉर योर सेल्फ। ओके, अब इसमें करना कुछ नहीं है, मैंने एक यूट्यूब पे लिंक भी यहाँ पे दिया है, वो यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो भी है छोटा सा, 3 से 5 मिनट का, 3 मिनट का एक्सरसाइज मैंने बताया।
मैं ये एक्सरसाइज में आपको अभी बता देता हूँ कि उसमें करना क्या है। आपको पता है ऊपर से नीचे हमारे कितने जॉइंट्स है। तो जॉइंट्स में क्या करना है, सिर्फ नेक और नी को रोटेट नहीं करना है, हाफ करना है। ऑर्थोपेडिशियंस का ऐसा कहना है कि आप कंप्लीट ऐसे जो हम लोग करते हैं ना टर्निंग, ये नहीं करना है, हाफ करना है फ्रंट साइड में और हाफ बैक साइड में ऐसे करना है। तो ये आप एक्सरसाइज क्या करना है, वहां से नेक से चालू करना है, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, यहाँ पे, यहाँ से वो नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा आपका ट्रंक, उसके बाद आएगा आपके नीज, उसके बाद एंकल्स। इसमें क्या करना है, आपको रोटेशन करना है 4 to 8 टाइम्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जहां पे हो सकता है। और आपको आपके सीट पे से उठ के बैठना है 8 बार, 8 टाइम्स। ओके, इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस एवरी आवर नो फॉर, इट विल रिक्वायर, इट नीड्स ओनली 3 मिनट्स, इसको 3 मिनट का समय लगेगा। और जब हम लोग एक आधा, अभी देखिए चाय पीने गए हम लोग तो 10 के 20 मिनट हो गए, राइट। तो ये ऐसे होता है कि 20 मिनट तो हम लोग चाय में लगा देते हैं, चाय पीने में। तो मैं सोचता हूँ कि अगर 8 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं या 7 घंटे, 7 × 3 21 मिनट लगेंगे। 21 मिनट में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सवेरे जैसे आते हैं ना 10 बजे, जितने ताजे आते हैं ना, 6 बजे अपना कैंपस छोड़ते समय उतने ही ताजे रहेंगे। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। बहुत से स्कूल के एडवाइजरी कमेटी पे हूँ, तो वहां पे मैंने आया से लेके, ड्राइवर से लेके, प्रिंसिपल से लेके, लड़कों को तो है ही है, जहां पे है वहां पे वो गोंग बजेगा एवरी मिनट, एवरी आवर 3 मिनट का गोंग बजेगा, उस समय में इतना करना है। इतना बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट हमने देखा, 30% एफिशिएंसी हमने उनमें देखा, मतलब स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन से 30% एफिशिएंसी बढ़ा हुआ देखा। बहुत से लोगों ने ऐसा कहा कि हम लोग शाम में जाते थे घर पे, तो बहुत लोगों के हमारे चेहरे देख के मायूस हो जाते, दूसरे चेहरे घर वालों के। अब ऐसा नहीं होता, वो भी खुश है, हम भी खुश है। तो मैं सोचता हूँ ये कर 3 मिनट 1 घंटे में आप दे सकते हो ना, कुछ करना नहीं है। मैंने बोला जैसे कि आपके जॉइंट्स है उसको सिर्फ मोबाइल करना है, रोटेट करना है जो रोटेट कर सकते हैं। मैंने बोला नी और नेक को छोड़ के, जैसे ऑर्थोपेडिशियंस का कहना है नी ये सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन में होता है, नेक एक्चुअली पिवोटल जॉइंट है जहाँ पे सरकमडक्शन भी होता है, लेकिन नहीं करना ऐसे बताया, क्योंकि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो दिस इज ए कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय मी, आई हैव इवन मतलब ये चीजें मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में भी परकुलेट की है, कुछ बैंकिंग सेक्टर में जाके किया है। लेकिन एक देखा है मैंने, वैसे मैं बोलता हूँ ना कि लोग भी बोलते हैं कि 5,000 साल से हमारे पास गीता है, समझो वेद है, कुरान है, पुराण है, सब है, बाइबल है, सब है, सब में ना अच्छाई बताई गई है, लेकिन क्या वो अच्छाई हमारे अंदर उतरी है? तो बताते बहुत लोग हैं, 5,000 साल से वही कर रहे हैं, मैंने भी वही कोशिश की, लेकिन सुनता कौन है ना। तो ये मेरी दुविधा थी कि सुना किसी ने नहीं, लेकिन ठीक है, मेरा प्रयास था कहने का। तो मैं बैंकिंग सेक्टर उनको भी मैं थोड़ा सा कह के आया हूँ, जहाँ जहाँ भी मेरा अप्रोच था वहाँ पे। तो ये मैं सोचता हूँ बहुत एफिशिएंटली काम कर गया, जहाँ पे हमने स्कूल में इस पे काम किया है। थोड़ा सा ना हम लोग बहुत काफी उम्र से बड़े हैं और मैच्योर है, सब मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ना थोड़ा सा आपको छोटा करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं ना आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने ना बॉडी और माइंड से कुछ प्रॉमिस करना है। प्रॉमिस करना वो है जो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाला प्रॉमिस नहीं करना है। तो देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, राइट। समय रुकता नहीं है किसी के लिए ना, और लहरें भी रुकती नहीं है किसी के लिए, है ना। तो मैं सोचता हूँ आज ही अच्छा समय है, तो आज क्यों ना ये सेशन 5-6 बजे आपका जब खत्म हो जाए ना, तो आधा घंटा हम लोग फिर के आ जाए, है ना, पैदल चल के आ जाए, अपने लिए आज से चालू करते हैं। बहुत बार हमने सुना है ना बचपन से, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कीप्स मी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना। कितना अच्छा सेंटेंस है, लेकिन कभी उसके ऊपर तामीर किया है, कभी उसके ऊपर हमने कुछ किया है क्या? तो नहीं करते, रात में बैठ के टीवी देखते हैं, बहुत सारा लेट सोते हैं, सवेरे फिर लेट उठते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये एक बार ना करके इसका बोध ले। मैं बहुत बार ऐसा करता हूँ, हम लोग टीचिंग में है, राइट। मैं एक छोटा सा ना उदाहरण देता हूँ, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एवरीबडी, आई एम फ्रॉम द सेम फील्ड। सो मैं भी सोचता हूँ कि हम दो प्रकार के गुरु मैंने देखे। एक पांडित्यपूर्ण गुरु होता है और एक बोधिपूर्ण गुरु होता है। जो बोधिपूर्ण गुरु है ना, उस वो अनुभव से सीखता है। हम लोग कहाँ से सीखे मालूम क्या? हम पांडित्यपूर्ण गुरु है, हम तोता रटन करते हैं, हम बुक से सुन चुके, सह चुके, सब मतलब क्या कहते हैं कि सब अपने को जम गया, सब अपने सीख लिया। कहाँ से सीखा? बुक से सीखा। अपना अनुभव क्या था? तो कुछ नहीं था। तो प्रज्ञा के ना 3 स्टेजेस है।
एक पहली प्रज्ञा जो बोलते हैं ना हम लोग, प्रज्ञा मतलब पता है आपको, अवेयरनेस, अवेयरनेस जो है ना, तो 3 प्रकार की प्रज्ञा है। जो पहली प्रज्ञा है ना, उसको क्या बोलते हैं, श्रुत प्रज्ञा। जो पढ़ लिया, सुन लिया, उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ ना, उससे क्या हो गया, श्रुत प्रज्ञा जागी हो गई। दूसरी प्रज्ञा, जब सुना है, कहा है ना, तो उसके ऊपर चिंतन करते हैं हम लोग, मनन करते हैं, तो उसको चिंतनमयी प्रज्ञा बोला जाता है। ये दूसरी। ये 2 स्टेजेस तो ठीक है चलने के लिए, पहले पहली ये हो स्टेप होनी चाहिए, दूसरी। लेकिन जो तीसरी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भावनामयी प्रज्ञा कहा गया है। एंड दैट इज अनुभव। अनुभव से जो सीखता है ना, वो उसको शायद वो कुछ करना। आपको मैंने कहा कि आप कहीं ट्रिप पे गए, तो एक ट्रिप का ना, आप जो गए ना, उसका बयान कीजिए। ये इसको पढ़ना पड़ता है आपको कहीं, या सोचना पड़ता है? अरे भाई, जो किया वो तो अनुभव है, अनुभव का अनुभव आपको आपको क्या करना है, पेपर पे उतारना है। तो ये भावनामयी प्रज्ञा है। तो मैं सोचता हूँ ना, हम लोग पांडित्य पूर्ण गुरु है, हम ना बोधि पूर्ण गुरु नहीं है। बोधि उसकी है जो जाग गया, जो अवेयरनेस में है। लेकिन हम लोग सिर्फ क्या है, दूसरों का ज्ञान लेते हैं, उधार ज्ञान लेते हैं, और दूसरों, किसी का ज्ञान लिया, मैं आप तक पहुंचा, मैं सिर्फ जरिया रहा उसका, है ना। तो ये थोड़ी हल्की बात हो गई। मैं सोचता हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी। इसमें से कोई होगा जो बुद्ध होगा, बोधिपूर्ण होगा, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, मैं हो सकता है। लेकिन मेरे बारे में मैं कहता हूँ कि मैं पांडित्यपूर्ण गुरु हूँ, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो मैं एक जरिया हूँ, सिर्फ बीच में का एक दुआ हूँ। आई एम ए मीन, दैट्स ऑल। तो ये थोड़ा सा था। तो मैं सोचता हूँ, आई एडिक्ट माई सेल्फ टू मिनिमम रेगुलर एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। थोड़ा सा एडिक्ट करना है। एडिक्ट किस चीज के करना है? तंबाकू, दारू, सिगरेट, इससे नहीं एडिक्ट करना है। किससे एडिक्ट करना है अपने को? एक्सरसाइज से एडिक्ट करना है। कि एक्सरसाइज अगर ना करूँ ना, तो मुझे बेचैनी महसूस हो, से एडिक्शन होना चाहिए। एडिक्शन किसका होना चाहिए? अच्छी चीजों का। मैं बोलता हूँ कि फास्ट करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए। तो क्या, अन्न वर्ज नहीं करना है, पानी वर्ज नहीं करना है, मोबाइल वर्ज करना है, एक दिन गाड़ी को वर्ज करना है, एक दिन टेलीविजन को वर्ज करना है। ये ना, इसका फास्टिंग करेंगे, टेलीविजन फास्टिंग करेंगे, मोबाइल फास्टिंग करेंगे, है ना, बाइक फास्टिंग करेंगे। हाँ, इसका एक एक दिन फास्टिंग करेंगे हम लोग। ये ना, अन्न नहीं खा के फास्टिंग, ये थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी बात है। तो मैं सोचता हूँ कुछ अच्छी चीज लाने के लिए हम लोग फास्टिंग अलग तरीके से करते हैं। I bath regularly with room temperature water. At least have an adaptability with the room temperature water. एक छोटा सा, एक फिर से मैं रिसर्च यहाँ कोट करना चाहूंगा। ब्रेकफास्ट इज नेसेसरी फॉर मी, ऐसे लिखा है मैंने। नेसेसरी फॉर मी, फॉर एवरीबडी, व्हाट आई मीन टू से। दो एक एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं कि देखा गया है कि जो बच्चे अर्ली एज में, स्कूलिंग जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने ब्रेकफास्ट अच्छा किया है ना, लंच तक उनका ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जिसने स्किप किया ना ब्रेकफास्ट, लंच के 2 घंटे पहले से उनको लेथार्जी आने लगता है, उनका मतलब ग्रास्पिंग कैपेसिटी कम होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि माइंड का जो ये है ना सेल्स, वो ज्यादातर ग्लूकोज खाने लगते हैं। और वो अगर किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, तो शुगर लेवल आपका ब्लड का कम होने लगता है। सो दिस मेक्स समथिंग डिफरेंट। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया लोगों ने, जिनके फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स हुए ना, उनका थोड़ा सा डेटा निकाला। तो उनके फैक्ट्री में जिनके एक्सीडेंट लंच के 1-2 घंटा पहले हुए ना, उनमें देखा गया है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। द थिंग इज दैट दे लूज देयर मेंटल कैपेबिलिटी और अटेंशन पावर इफ दे हैव लो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल, तो ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए। जैसे हमारे योग में बताया गया ना, आयुर्वेद में उल्टा पिरामिड, है ना। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, और लंच लाइक ए मीडियोकर, एंड डिनर लाइक अ बेगर, है ना। बेगर मतलब रोड पे बैठ के नहीं खाना है, बेगर मतलब कम खाना है ना, बहुत कम खाना है। आई स्लीप ओनली ड्यूरिंग नाइट्स, व्हाट आई एम प्रॉमिसिंग टू माई सेल्फ, आई स्लीप ओनली ड्यूरिंग नाइट्स। मैं काला हूं मतलब तुम गोरे हो, इतना ही फर्क है ना। मतलब मैं दोपहर में नहीं सोता। इसका मतलब क्या है? आई स्लीप ओनली ड्यूरिंग नाइट्स, इसका मतलब है दोपहर में सोना मना है ना। दोपहर में सोना कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फुल मील्स इन अ सिटिंग इज हार्मफुल। डिवाइड टोटल इनटेक ऑफ अ डे इन 5 to 6 टाइम्स। एक ही बार। हमारे पास कैसा है, थोड़ा सा हमारा कल्चर ऐसा है कि जब भी बैठो ना नीचे, तो पेट डकार आने तक खाना खाओ, पेट फूलने तक खाना खाओ, कंप्लीट ठूस ठूस के भरो। तो ये थोड़ा कम करना है हमको। क्योंकि क्या होता है, एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि लेडीज का प्रेगनेंसी जो है ना, वो 9 मंथ्स रहता है। वो उतना बेयर करने के बाद ना, लाइफ टाइम का बैक पेन आता है उनको। जेंट्स का तो प्रेगनेंसी 10-10 साल का है। समझ रहे हैं आप? टोन लेके चल रहे हैं हम लोग 10-10 साल से। आर यू रिड्यूसिंग इट?
हमारा ये क्यों प्रॉब्लम है, बेसिकली मैं बताता हूँ। आपका इंटेक है ना, आपको कम नहीं करना है, आपका इंटेक उतना ही रखना है जितना खाना है, क्योंकि आपका बॉडी का नीड है। तो आपको क्या करना है, उसको सिर्फ ना डिवाइड करना है। एवरी टाइम यू हैव समथिंग, यू कीप हाफ टमी योर, जस्ट एम्प्टी, एम्प्टी रखना है, फुल नहीं खाना है। तो ये, इससे क्या होगा, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। आई ऑलवेज एंजॉय ईटिंग रॉ फूड टू बॉयल, बॉइल टू फ्राइड, फ्राइड टू स्टेल और प्रिजर्व। स्टेल और प्रिजर्व खाना ही नहीं है। बॉइल, अगर जो कच्चा नहीं खा सकते उसको उबाल के खाओ, जो उबाल के नहीं खा सकते उसके शैलो फ्राई करके खाओ, और जो डीप फ्राई करना है ना वो तो खाओ ही बीच में, है ना, उसको टाल ही दो ना, क्यों खाना है, नहीं खाना है वो। ओके, आई एंजॉय ब्रीदिंग डीपली, मतलब पेट से सांस लेना सीखना है। माइंड अल्टरिंग थिंग्स आर हार्मफुल, डेफिनेटली वी नो एवरीथिंग, एवरीबडी नोज एवरीथिंग। आई अवॉइड टोबैको, लिकर, स्मोकिंग, ड्रग्स एक्सेट्रा, ठीक है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉमिस लेना है। माई लीजर टाइम क्रिएशंस आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड, कीप योर लीजर टाइम एंड व्हाट यू कॉल एनहांस योर हॉबीज, हॉबीज को थोड़ा सा रखो, बरकरार रखो। जिंदा आदमी उसी में रहता है, काम तो वही, ये जबरदस्ती का है ना, पगार मिल रहा है इसलिए काम है। हॉबी कैसा है, हम दिल से करते, तो जिंदा रखो, मतलब जिंदा दिली से जियो। When awake, I enjoy nature's beauty than straining my eyes by watching movies, television sets, and today mobiles. Right, maximum mobiles. Silence is golden. बात तभी करो जब नेसेसरी है। I talk whenever necessary, है ना। तीन चीजों से बहुत प्रॉब्लम होता है। किससे किससे प्रॉब्लम होता है, एक तो कंप्लेंट से, एक तो एक्सपेक्टेशन से, और तीसरी बात बताऊं, बहुत बड़ी बीमारी बात करने की। बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे बोले ना कि पानी सबको जरूरी है, सबसे ज्यादा डिसीज पानी से होते हैं, पता है आपको। तो ये जो है ना, जैसे बात जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ना बातों से होते हैं। तो ये थोड़ा सा ना कंट्रोल करना चाहिए, जब जरूरी है तभी बात करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू सॉरो, जैसे मैंने अभी बताया कि दुख के दो चार कारण है, उसमें अपेक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। और आई अवॉइड कंप्लेंट्स। जब एक्सपेक्टेशन आएंगे ना तो डेफिनेटली कंप्लेंट्स आएंगे, भाई वो मैं ऐसा करना, उससे मैं ऐसी उम्मीद कर रहा था, उसने ऐसा नहीं किया, अगेन कंप्लेंट। ओके, सो एक्सपेक्टेशंस आर सॉरोफुल थिंग्स। आई एंजॉय वॉकिंग देन अ राइड, मतलब कभी अगर ऐसा मौका है ना कि बहुत पास में है और दूध लाना है, पेपर लाना है, तो चलते जाना पसंद करो। गाड़ी पे बैठ के जाने से चलते जाना पसंद करो। 3D फॉर विक्ट्री, जैसे मैंने अभी बताया था, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। प्रिंसिपल्स आर फॉर मी, हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाते हैं, वो किसके लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। भाई अपने लिए तो सब माफ है ना। तो इतना नहीं करना है, अपने लिए प्रिंसिपल्स होना चाहिए। आई डोंट सर्च एक्सक्यूजेस फॉर माई सेल्फ, है ना, एक्सक्यूजेस अपने लिए नहीं। एक्सक्यूज हम लोग अपने को करते हैं और दूसरों को पनिश करते हैं। सो थोड़ा सा उल्टा करना है, मैं सोचता हूँ अपने को पनिश करो, दूसरों को एक्सक्यूज करो ना, भाई क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा दिल रखो और एक्सक्यूज कर दो, क्या बात होती है। अपने को पनिश करो, तो क्या है, पनिश करो मतलब क्या है, कि थोड़ा सा जो नहीं चाह रहे, सवेरे उठना नहीं चाह रहे तो उठ के देखो, पनिशमेंट है। चलना नहीं चाह रहे तो चल के देखो, पनिशमेंट है। बस इतना ही पनिशमेंट लेना अपने को। When I get frustrated after repeated efforts, I cope my frustration, remembering it is so because it cannot be otherwise। ये सेंटेंस है ना, एम्स्टरडेम में कैथेड्रल है, वो वहां पे एक सेंटेंस लिखा है, जहाँ पे ये करते हैं ना, बैरियल ग्राउंड वगैरह रहता है, इनका जहाँ पे क्रिमेशन वगैरह होता है ना, तो वहां पे वो लिखा हुआ है, क्या है देखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है। इट इज सो बिकॉज इट कैनॉट बी अदरवाइज, ये ऐसा ही है क्योंकि ये दूसरी तरीके से हो नहीं सकता था। ये छोटी सी बातें थी। अब एक बड़े आदमी की बातें सुनती है कि नेगेशन में पॉजिटिविटी कैसे रहता है। तो आपने भी सुना होगा एपीजे कलाम जी को, जिन्होंने बोला है फेल मतलब क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सीधी नेगेटिविटी में कितना पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है आदमी। एंड मतलब क्या है, एफर्ट नेवर डाइज। और इफ somebody सेज नो टू यू, it is next opportunity which is waiting for you, as said by the great person। देखो यहाँ पे एक छोटा परसेप्शन की बात करता हूँ। एक ना एथीस्ट था, मतलब एक पिताजी एथीस्ट था, तो उसने अपने ना दीवार पे लिख रखा था, नीचे लिखा है देखो मैंने, GODIES NOWWHERE। तो एथीस्ट क्या बोलता है कि गॉड इज नोवेयर, राइट। तो उसका बच्चा था छोटा, तीसरी चौथी में पढ़ने लग गया था, थोड़ा बहुत इंग्लिश आ रहा था, तो उसने क्या पढ़ लिया मालूम है क्या, गॉड इज नाउ हियर। सी द सेम सेंटेंस, हाउ यू रीड इज डिफरेंट थिंग। गॉड इज नो वेयर वही है, वही उतने ही लेटर्स है उसके अंदर इंग्लिश के, और गॉड इज नाउ हियर उसमें भी उतना ही। देखने का नजरिया कौन सा है इसके लिए। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ना, छोड़ो मत,
ये करो, इसको देखो ना, ऐसे बोलो, डोंट क्विट नहीं, उसमें एंटी निकाल दो, क्यू यू निकाल दो, तो डू इट, से डू इट। ओके, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव अफर्म, ये ऐसा मत करो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना होगा आपने। सिगमंड फ्रॉइड और उसके मिसेस अपने बच्चे के साथ एक गार्डन में गए, तो वहां पे क्या हो गया कि वो बातचीत में मशरूफ हो गए, मियाँ बीवी, तो बच्चा गायब हो गया, वहां से गायब हो गया। तो ये माँ तो माँ होती है कभी भी, तो उस वो परेशान हो गई ज्यादा। तो सिगमंड फ्रॉइड बोला कि देखिए, मुझे ना साइकोलॉजी के पिताजी के नाम से जाना जाता है, मैं साइकोलॉजी का ना पिताजी हूँ, बाप हूँ बोले। तो आप बताइए मुझे, सिर्फ आपने उसको क्या कहा था कि क्या नहीं करना है, ये कहा था। तो उसने बोला कि मैंने बोला था कि वो जो फाउंटेन्स है ना, वहां पानी है, तो वहां मत जाओ बोला था। तो बोले चले उधर देखते हम लोग, तो वहां गया तो बच्चा पानी में खेल रहा था। मतलब क्या होता है कि व्हेन यू से समथिंग नेगेटिव नो, तो इट अट्रैक्ट्स, तो ऐसे नेगेटिविटी नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट क्विट, से डू इट। फाइन। सो अपन ने, जैसा हम लोग हर बार बोलते हैं ना, विच वन आर यू, मैंने इधर लिखा है हाफ फुल या हाफ एम्प्टी। तो ये नजरिया है, फिर से, आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है। तो ये कहने से समझता है कि पर्सपेक्टिव कौन सा है। हम बहुत सारे आईने डाल चुके हैं, है ना। तो ये आईनों में से जब देखते हैं ना, तो पीलिया होता है, जैसे जॉन्डिस हो गया तो दुनिया पीला दिखने लगता है, ऐसा अपना नजरिया कैसा है उसके लिए है। दिस इज परसेप्शन एंड एटीट्यूड। एक छोटी सी बात लास्ट में फिर से कहूंगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा मतलब मैथमेटिकल रहता है ना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी हो जाता है ना। तो वैसे ही छोटी सी बात है, चेंज थिंकिंग चेंज योर लाइफ। तो जैसे मैंने बोला है, यहाँ से हिंदी में फिर बयान करना चाहूंगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपका सोच बदलोगे ना, तो आपके विश्वास बदलेंगे, आपके विश्वास बदलेंगे ना, तो आपकी अपेक्षाएं बदलेगी, आपकी अपेक्षाएं बदलेगी तो आपका नजरिया बदलेगा, आपका नजरिया बदलेगा तो आपका कार्यमान बदलेगा, और आपका कार्यमान अगर बदलेगा तो आपकी जिंदगी बदलेगी। तो थोड़े में क्या है कि चेंज थिंकिंग एंड चेंज योर लाइफ, ये सब ना सीक्वेंस है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, देन ए इज इक्वल टू डी। तो चेंज थिंकिंग चेंज योर लाइफ, मैंने पहले बताया था चेंज क्या किया था ईगल ने, तो बहुत सारा चेंज किया था। एक छोटी सी कहानी जॉर्ज गुरजीफ की सुनाता हूँ आपको। जॉर्ज गुरजीफ कौन था? एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था 18th 19th सेंचुरी के दरमियान। तो वो 9 साल का था और उसके पिताजी मरण शैया पे थे। तो मरण शैया पे थे, तो उन्होंने उसको बुलाया, बोला बेटा मैं तुझको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो मैं एक सीख देता हूँ बोला। वो क्या बोला, कुछ भी कोई भी ना तेरा अप्रिसिएशन करे या कोई भी तेरी निंदा करे ना, तो उसको बोलना भाई आई विल गिव द आंसर आफ्टर 24 आवर्स। नाउ यू कैन इमेजिन दैट 24 आवर्स। ओके, आपको ना, मैं बोलता हूं कि रेस्पॉन्स और रिएक्शन, दिस इज व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू टेल। रिएक्शन क्या होता है, इमीडिएट आप क्या करते हो, बहुत अलग तरीके से रिएक्शन होता है। रेस्पॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी, ना, कंपैरेटिव या फिर कंपटीशन। इसमें क्या है, मैं बताऊं आपको, इसमें ईगोइस्टिक फीलिंग है। बट अब इसको ही ना अलग एक वर्ड यूज करो ना, रिलेशनशिप, ऐसा वर्ड यूज करो ना, इट्स इन समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये थोड़ा ईगोइस्टिक फॉर्म में आता है। देखिए आप सोच के देखिए, आप जैसे रिलेशनशिप ये वर्ड आएगा ना, इमीडिएट आपका ये चेंज हो जाएगा। तो उसको बताया कि 24 आवर्स के बाद आपने उसका जवाब देना है। उसने कहा कि मेरे लाइफ का ये टर्न था, उसके ऊपर से उसने एक फिलॉसफी डेवलप किया और इतना बड़ा आदमी हो गया वो। उसका इतना ही कहना था कि आपको जो भी आए, जो तारीफ करे तो बहुत उछल मत जाना, कोई निंदा करे तो बहुत मायूस ना होना, आप इसके लिए 24 घंटा अपने लिए देना कि वो जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था, इसका एनालिसिस करना, इसके लिए आपको थोड़ा समय देना चाहिए। The last thing I would like to say over here, my presentation will be complete now. I would like to thank everybody for patient listening. मुझे बर्दाश्त करने के लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक लास्ट में एक छोटी सी बात कहूंगा, बहुत बड़े आदमी की एक छोटी सी बात है, वो कहूंगा कि आई नो ओनली वन थिंग, दैट आई नो नथिंग। सो थैंक यू वेरी मच। एक छोटे जाते जाते एक ना बुद्धा का एक स्टेटमेंट है, वो कहना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि मेच्योरिटी इज नॉट समथिंग व्हेन यू टॉक बिग, व्हेन यू थिंक बिग, मेच्योरिटी इज समथिंग व्हेन यू अंडरस्टैंड स्मॉल थिंग्स। मैं छोटी छोटी बातें मैं आपको कह चुका हूँ, वो छोटी छोटी बातें अगर समझ गई ना,
तो वो मैं समझता हूँ वो अपना मेच्योरिटी है। तो मेच्योरिटी इज नॉट टॉकिंग बिग, इट इज टू अंडरस्टैंड स्मॉल थिंग्स। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाउ विल स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चंस। किसी को क्वेश्चंस है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। Yes, ma'am. Shall we start question answers? Yes, sir. We can Yeah, start, sir. yeah. Yeah, Hello, questions sir. कर रहे थे। Excuse me. 32 number. Yes, ma'am. Yes. It was so interesting and a very helpful lecture, sir. Yeah, thank you. Okay, so, sir, my question was that you initially, prima facie, you said that, we have to stand for one leg. What was that? That is balance test. Actually, we have in sports, no, Stark test or Bastix test is there, which is which actually estimates your balancing ability. Balancing ability is something where your mind coordinates your muscles. Okay. Now, this is something you need to stand on single leg. You have to stretch your arms sideways to balance, and you have to close your eyes. See, when you close your eyes, you lose your orientation about space and time. Fine. So that will exactly evaluate your balancing ability. If you open your eyes, you can balance for a longer period. Okay, sir? Okay, sir. Yeah. Thank you. Yes. Next question. एक मैडम कोई पूछ रहे थे, क्वेश्चन कुछ था उनका कि कितना लीटर Roll से number 6 नहीं। is not there, sir. और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? 63. How to overcome problem of maintaining consistency in Consistency in anything we any. start? See, it's just fantastic question. मैं इसको आंसर करना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या है। मैंने जैसे अभी बोला ना कि एक्सक्यूज अदर्स पनिश योरसेल्फ। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल व्हाट आई मीन, व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, कि खुद को पनिश करने जब चाहोगे ना तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक आएगी। मतलब अगर आपको कुछ स्टार्ट किया, देखिए बहुत से लोग ना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन कहाँ रुकना है ना ये नहीं पता चलता। देखिए बहुत सारी चीजों में ऐसे होता है, और जहां पे अपने को रुकना नहीं समझता ना वहां प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम लोग। तो मैं सोचता हूँ कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे रुकना भी समझना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है। मैं बोलना, आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी, द वन हु इज आस्किंग क्वेश्चन? यस, ओके फाइन। सो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बार ना हम लोग इमिटेट करने को जाते हैं। जैसे बाजू वाला इतना कर रहा है तो मैं भी उतना कर सकता हूँ। तो मैं पहले बता दूं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, एक जैसा दूसरा कोई नहीं। 3 बिलियन पीपल आर देयर। इफ यू शो मी दैट 2 पीपल आर द सेम, आई कैन चैलेंज यू एवरीथिंग। ओके। तो ये सब डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इतने हैं। तो पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि कॉपी ना करें। अपना बॉडी ना कुछ कहता है अपने से, उसको सुनने की कोशिश करें। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत बार हम लोग ना गांधी जी के 3 बंदर देखते हैं, है ना। गांधी जी के 3 बंदर है ना, एक ने आंख बंद कर रखी है, एक ने कान बंद करके, एक ने मुंह बंद कर रखा है। तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। बट ऑन टू फिलोसॉफिकल लेवल ना ये बात वैसी नहीं है। ये बंदर किसने दिए थे गांधी जी को पता है? एक जेन मेडिटेटर, जापानीज जेन मेडिटेटर ने दिए थे। उसका जो कहना था ना इसके पीछे एक ऐसी बात थी कि अपनी आवाज सुनो, अपने को अंदर से देखो, और अपने को हो। इट इज नॉट दैट सेइंग कि बाहर नहीं कहना है। देखो एक बात मैं कह देता हूँ, आपने कुछ देख लिया, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये अच्छा है बुरा है। ओके, आपको कह दिया किसी ने कि ये बुरा है, पहले से अपने को ये कर चुके हैं, रीइंफोर्स कर चुके हैं कि ऐसी चीज बुरी है। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं देखना है तो आंख बंद कर ली। अब क्या होता है, देखिए माइंड का एक ये प्रॉब्लम है। अब आंख जब बंद करते हैं ना तो बाहर की चीज जो देख चुके हैं ना आप, वो अंदर फिल्म की तरह रोटेट होने चालू होती है। सो आपने कहाँ रोक दिया उसको, आपने तो ज्यादा उसके ऊपर अध्ययन करना चालू कर दिया। तो ऐसे नहीं है, अपनी आवाज सुनो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को देख के इमिटेट मत करो, अपना बॉडी कुछ कहता है उसको सुनने की कोशिश करो। मैं अगर 14 किलोमीटर वॉक करता हूँ, इसका मतलब मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा कि आप भी उतना ही करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 2 किलोमीटर से चालू कीजिए, 3 किलोमीटर से।
मेरा बॉडी क्या कह रहा है वो मुझे अगर इंडिकेट कर रहा है, मेरे मतलब प्रोज एंड कॉन्स दिखा रहा है, तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए, उसको देखने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ना ट्रीटमेंट करता है, तो हमको पता है कुछ टैबलेट्स है, जैसे 650 ये है, तुम्हारा पैरासिटामॉल है, ब्रूफेन है। हर दवाई को एक ही हर मर्ज को एक ही दवाई देता है क्या? नहीं ना, इसलिए डॉक्टर है ना वो। अगर सब अपने को पता है कि बुखार के लिए इतना है, पेट दुखने के लिए ये है, इसके लिए ये है, कारण अलग अलग है ना, चीजों के कारण, इसीलिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग है, इसीलिए हर एक का कैपेबिलिटी अलग है। तो मैं सोचता हूँ कि इमिटेट ना करें। और कंसिस्टेंसी के लिए मैं बोल रहा हूँ फिर से, ये थोड़ा ना मेंटल टफनेस की बात है ना, मेंटल टफनेस, कि मैं जो सोच रहा हूँ ना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरे लिए क्या अच्छा है। कुछ होता है, बोलता है दोस्त आता है, अरे रहने दे यार, आज के दिन छोड़ दे उसको, देखेंगे कल। So you should be very defined with yourself. First start promising yourself that I will not miss. अब इसके लिए हम एक छोटा सा ना ये करूंगा, आपको एक एडवाइस दूंगा मैं, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है या आप एक्सरसाइज का जो शेड्यूल कर रहे हैं ना, वो सवेरे का कर लेना। सवेरे का करेंगे ना, शाम में क्या है कि बहुत से असाइनमेंट्स आती है, कुछ काम निकल आता है, कुछ इमरजेंसी निकल आती है, तो हमारा बहुत मिस हो सकता है। सवेरे का शेड्यूल ऐसा है कि सवेरे अपने आप में सब बिजी रहते हैं, तो वहां पे अपना समय अपने को मिलता है। तो मैं सोचूंगा कि जिन्होंने सवेरे चालू किया ना, उनका बहुत दिन तक बरकरार रहा, वो कंटिन्यू करते रहे। शाम का समय ऐसा होता है, मैंने जैसे बोला अभी, कोई आता है डिस्टर्ब करता है, किसी का काम होता है, हमारे लिए कुछ काम लग जाता है, जैसे ऑफिस में 5 बजे तक रुकना था, हमको 7 बजे तक रुकना पड़ा, हो सकता है ना, तो हमारा शेड्यूल मिस होता है। और एक दिन अगर मिस होता है ना, तो खाने में ऐसी चीज नहीं करते कि एक दिन खाना मिस हो गया तो जाने जाने दे यार, दूसरे दिन भी खाना क्यों खाना है, ऐसे नहीं होता। खाना मिस नहीं करते, एक्सरसाइज जरूर मिस करते। एक दिन होगा, बहुत से लोग ना मंडे प्रॉमिसर रहते, 1 तारीख के प्रॉमिसर रहते, या 1 जनवरी के प्रॉमिसर रहते। देखो वो जो है ना, वो 8-10 दिन में गायब हो जाएंगे। 1 जनवरी को मुझे ना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग टहलते हुए दिखते, 1 जनवरी। और जैसे जैसे 8-10 दिन होते हैं ना, जो 1 जनवरी वाले हैं ना, वो कम होने लगते हैं, क्योंकि दे आर डिफाइंड टू द टाइम 1 जनवरी। इसलिए मैंने बोला स्टार्ट टुडे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आज ही चालू कीजिए, आज ही सही समय है। समय कुछ गलत और अच्छा और बुरा नहीं होता। मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बार हमको कहने की आदत है कि ये अच्छा है ये बुरा है। मैं एक छोटा सा बात कहूंगा, एक डिफरेंट एक चीज है, एक फिलॉसफी है, तो से इट्स डिफरेंट। ओके, एवरीथिंग क्लोजेस। ये अच्छा है ये बुरा है ना, अच्छा बोला तो प्रॉब्लम है, बुरा बोला तो प्रॉब्लम है। आप कह दो ना कि ये अलग है, कितनी अच्छी बात है, अलग ही है ना। सो सब आप लोग अलग अलग कि अपना सेटअप अलग कीजिए, अपना डिफाइन कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एनीबडी, और किसी को है सवाल? आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। मैं कोशिश करूंगा मेरे बुद्धिमत्ता, मेरे नॉलेज के हिसाब से। अगर नहीं होता है तो मैं एडमिट कर लूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आई बी हैप्पी टू आंसर यू। हमारे पास थोड़ा समय है, और एक 10 से 15 मिनट बाकी है हमारे पास। सर जैसे कंसिस्टेंसी को लेकर प्रॉब्लम्स आते हैं ना, हम्म, वैसे ही द टाइप ऑफ एक्सरसाइज, जैसे ट्रेंड यस, चेंज होते रहते हैं। करेक्ट, कभी कभी स्पोर्ट्स को लेकर अवेयरनेस ज्यादा आ जाता है, कभी जुम्बा, कभी एरोबिक्स, राइट राइट राइट, योगा, ऐसे। या तो अभी उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए सर हमारी एक्सरसाइज में? नहीं, देखिए जिससे ना प्लेजर मिलता है ना, वो पहली बात करनी चाहिए। मैं सोचता हूँ आइदर यू डू जुम्बा और यू जस्ट पुट ऑन द म्यूजिक एंड यू डांस, वॉट एवर वे यू लाइक। सो द मूवमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट होना जरूरी है। देखिए दो चीजें ना हम लोग बहुत बार ये करते हैं कि एक्सरसाइज और एक्सर्शन, इसमें ना हम लोग गलत करते हैं। बहुत बार लोगों का कहना है कि लेडीज को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत काम करती है घर में, तो बहुत ज्यादा लोड रहता है ऐसा। सी दिस इज कंपल्सिव। काम करना ना घर में, ये कंपल्सिव है, इट इज नॉट आपके थॉट से नहीं आ रहा है, वो आपको करना ही पड़ रहा है, इसलिए कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा फीलिंग नहीं है ना उसके पीछे। एक्सरसाइज जो कर रहा हूं ना, मेरा सेट ऑफ माइंड ही डिफरेंट है, तो उसके ना पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं तो क्या है, काम वाली है ना, हमारी वेट लिफ्टर चैंपियन बन जाती थी, है ना, इंडिया की वेट लिफ्टर चैंपियन काम वाली, है ना, हो सकती है ना, वो तो कितना काम करती है, एक घर में नहीं 10 घर में काम करती है। लेकिन इट इज एक्सर्शन, इट इज डन आउट ऑफ कंपल्शन, सो इट इज नॉट गुड फॉर, मतलब सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तो मैं सोचता हूँ कि आपको जो सुखद है, जो अच्छा लग रहा है, जो प्लेजरेबल है, बस उतना करना है। जुम्बा करो, एरोबिक्स करो, आपके दोस्त किसको जा रहे हैं, योगा को जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि स्लो स्टडी एक्सरसाइज, आपका नेचर अलग है, आपका डायनामिक नेचर है, तो आपको जुम्बा अच्छा लगेगा। किसी को शांत ऐसे लगता है तो वो योग एक्सरसाइज करेगा, मतलब आसन वगैरह पे खुश हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये डिफर करता है। तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ना, फिर से अपनी अंदर की आवाज सुनो, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो द फीलिंग इटसेल्फ ना, इट गिव्स मेनी प्लस पॉइंट्स। फीलिंग्स बहुत होना जरूरी है। ऐसे ही कर रहा हूँ तो ये ठीक नहीं। हम लोग देखो, काम वालों को काम बताते हैं ना, तो काम कर जाते हैं, है ना। लेकिन जो माँ खाना बनाती है ना, वो काम नहीं करती। वो उसकी सोच अलग है, इसीलिए उसमें ना स्वाद है ना। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, एनी क्वेश्चंस? देखिए, मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की है। हो सकता है मैं इसमें कुछ बोलते समय गलत बोल चुका हूं, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन मैं सोचता हूं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए कुछ कीजिए। सो दिस विल बी, मतलब मेरा बोलना अगर आपने इतना भी सुन लिया कि अपने लिए कुछ करना है, तो मैं सोचता हूँ ये लेक्चर बहुत कामयाब रहा मेरे लिए। सर बहुत अच्छा है सर आपका लेक्चर, मतलब ये कंपलसरी सबको सुनाना ही चाहिए कि वी आर लकी टू हैव एवरीथिंग। नहीं, थैंक यू वेरी हम मच। नेगेटिव थिंकिंग करते हैं ज्यादा, वैसे तो बहुत एग्जैक्टली अच्छा सर आपका लेक्चर। सोच पे ना बहुत निर्भर करता है। सोच अपनी थोड़ी सी ये होनी चाहिए। मैंने जैसे बोला ना कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रैटिट्यूड। देखो हम लोग ना बहुत बार, थोड़ा सा मैं बात कर सकता हूँ ना? यस सर, आपका ही टाइम है, आपके लिए वेटेड सर, और नहीं, इतना मैं अच्छा अभी बता रहे कहता हैं हूँ आप। कि हम नहीं लोग, नहीं सर, करो बात सर, बात करो सर। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग थैंक यू बोलते हैं ना, तो थैंक यू भी बहुत प्लास्टिक रहता है। तो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए यार। थैंक यू जीना चाहिए, मैं ऐसे सोचता हूँ। थैंक यू, ऐसे एक प्लास्टिक स्माइल दिया, थैंक यू ऐसे कर दिया तो हो गया? नहीं यार, उसको जियो। मैं सोचता हूँ थैंक यू जीना चाहिए, ग्रैटिट्यूड जीना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बोलने से तो ठीक है, हो गया काम, हो गया जैसा। काम नहीं करना है अपने को, काम तो सभी करते हैं ना, काम वाला भी काम करता है ना। और सभी के पास उतना ही समय, समय का सदुपयोग करना चाहिए। मोदी जी के पास भी 24 घंटे का दिन है, एक भिखारी के पास भी 24 घंटे का दिन है, और हमारे पास भी 24 घंटे का दिन है। तो मैं सोचता हूँ कितना क्या कर सकते हैं हम लोग। एक एक क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट जीना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अपने लिए, लोगों के लिए भी जीने में बहुत मजा आता है। देखिए, करके कुछ काम करो ना, तो अपने में अंदर ना एक बहुत ज्यादा ये डेवलप होता है। किसी के लिए कुछ कर जाओ ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा फीलिंग आता है अपने लिए। देखो, कभी कभार ना हम लोग भिखारी को 10-20 रुपए दे देते हैं, तो कितना अच्छा फीलिंग लेके चलते हैं ना। तो ऐसे ही कुछ काम भी करो ना, सिर्फ पैसे देने से ही नहीं होता। किसी के लिए मुस्कुरा दो, कोई कुछ कह रहा है तो अच्छी बात है ना। सामने वाला भी खुश होता है कि भाई मेरी बात सुन ली। किसी को एक पेशेंट अपना कान दो, थोड़ा सा समय दे दो, वो भी बहुत बड़ी बात है। आजकल सब देते हैं लेकिन समय नहीं देता कोई। ये बहुत मुश्किल बात है ना। देखा जाता है कि सर मुझे बिजी है, मैं ऐसा बिजी है। ऐसा क्या बिजी है? और ऐसी बात होती है, एक आध अपना दूसरा फोन करता है, कुछ ऐसा उसके दिमाग में है कि अभी सुसाइड करना है, उस समय में वो आपसे बात करना चाहता है। आप कहते हो कि भाई मेरे को ना बाद में बात करना है। खत्म हो गई ना बात, बात खत्म हो गई ना, है ना। तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समय देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से प्रकट आइए। ऐसे कुछ नहीं होता। थोड़ा सा अच्छा रहने से। देखिए, हम लोग हमारे फोटोज जब उतारते हैं ना, तो मुझे तो मेरा फोटो कभी पसंद नहीं आया। क्योंकि क्या होता है कि फोटो उतारने में मैं अलर्ट हो जाता हूँ, सेंसिटिव हो जाता हूँ। आप ना कभी बच्चों की फोटो उतारिए, किसी एनिमल की फोटो उतारिए, किसी झाड़ की फोटो उतारिए, वो कभी खराब नहीं लगेगी आपको। क्यों मालूम है क्या? उसमें ना अपना एक इंटरनल फीलिंग है, वो प्रिटेंशन नहीं है। हम लोग प्रिटेंड करते हैं। सो स्टॉप यार, स्टॉप प्रिटेंडिंग। है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन दिल से जो भी होना चाहिए दिल से होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा होने से अच्छा रिलेशन होता है, सराउंडिंग अच्छा होता है, आपका वर्किंग प्लेस भी अच्छा हो जाएगा, है ना। सभी टेंस में है, हम भी टेंस में बना रहे हैं, उनको टेंस कर रहे हैं, हमारा भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। तो सबका प्रेशर लूज कर दो ना, अच्छा रहता ना। सबका प्रेशर भी, अपना प्रेशर भी लूज हो जाएगा। सो बी कंफर्टेबल। जिंदगी एक ही बार है यार।
आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपने सब ये बातें बताते रहते तो स्टूडेंट्स के साथ या कोई आपके दोस्तों के साथ कि जिसने लाइफ चेंज कर दी इस थिंकिंग के साथ? मैं बोलता हूँ मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं। उनका एजुकेशन होने के बाद दिस इज माय रिवॉर्ड। मुझे लगता है कि ये मेरा रिवॉर्ड है कि बाद में भी उसको एक आधा टीचर याद आना चाहिए। मैं टीचर के जैसा रहता ही नहीं उनसे। आई विल बी विद, मैं जैसे फ्रेंड्स है ना वैसे रहता हूँ उनके साथ। और वो इतना कंफर्टेबल फील करते हैं कि हर एक चीज शेयर करते हो मेरे से। इधर वो मतलब मैं कहूँ कि वो लेडी स्टूडेंट भी है तब भी वो काफी चीजें हमसे शेयर करती है। और मैं सोचता हूँ ये उनका कॉन्फिडेंस है हमारे तरफ एज उनके मतलब पिताजी की तरह हमें देख रहे हो। तो ये कॉन्फिडेंस है उनका। तो ये कैसे आता है कि हम लोग ना अंदर एक बात और ऊपर एक बात करेंगे ना तो ये फीलिंग नहीं आता यार। आप देखो एक छोटा बच्चा भी ना समझता है कि सामने वाला कैसे बुला रहा है ना। तो वो उसको भी इंटेंशंस पता चलते हैं। मैं बोलता हूँ कि एक्सप्रेशन नहीं, इंटेंशंस प्योर होना चाहिए। एक्सप्रेशन कभी हमारे गुस्से वाले भी हो। एक आधी माँ अब बच्चा जा रहा है आग की तरफ तो खींच के लाती है, गुस्सा करती है, डांटती है। उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? रूड है। उसका पीछे का इंटेंशन बहुत प्योर है, पायस है। तो उसके लिए क्या है कि उसको भी समझ में आता है, बच्चे को भी समझ में आता है ये क्या चीज हो रही है। मैं सोचता हूँ कि एक्सप्रेशन की जगह ना इंटेंशंस, प्रिटेंशन की जगह इंटेंशन मैटर्स। एवरी टाइम यू स्टार्ट डूइंग इंटेंशन मैटर्स। और कोई गलत और कोई सही नहीं है यार। मैं सोचता हूँ अलग है ना, अलग ऐसे देखो ना उसको। गलत सही क्या है, क्या पैरामीटर्स है? देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी सोसाइटी के अंदर दूसरे आदमी को मार डालता है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं मर्डर। वही एक्ट हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर पे वही काम कर रहा है एक सैनिक हमारा। तो दोनों के गले के आजू बाजू ना एक चीज गिरती है। जो सोसाइटी में करता है ना उसके आजू बाजू गले में ना फांसी का फंदा पड़ता है। और जो बॉर्डर पे करता है ना उसके गले के बाजू ना मेडल पड़ता है। सी द एक्ट इज सेम, सिचुएशंस आर डिफरेंट, है ना। तो उसके क्या है, रिजल्ट्स तो अलग है यार। ये अलग है, वो अच्छा है ये बुरा है। हाउ यू कैन से दैट अच्छा है बुरा है? ये अलग है, इतना सोचो। तो ये अलग की फिलोसफी ना बहुत अच्छी लगी मुझे। ये मैंने कहाँ से सीखी मैं आपको बताता हूँ। कि ऐड आता था मैगी का ना, टमाटो केचप का, पिचको करके एक ऐड आता था। उसमें बोलता था इट्स डिफरेंट। सो आई थॉट यार दिस फिलोसफी इज जस्ट फंटास्टिक। नेवर से गुड और बैड। मम्मी ने कभी बनाया कुछ, पहले भी बनाया था, पहले अच्छा हुआ था अभी खराब हुआ। उसको बोलो ना खराब नहीं हुआ, ये अलग हुआ है ऐसे बोलो। पहले के जैसा नहीं, ये थोड़ा सा अलग हुआ है। अलग भी हो सकता है ना। कैसे वही चाहिए आपको? वही नहीं हो सकता, है ना। हर दिन वही नहीं हो सकता ना, अलग अलग होता है। तो एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि अलग है यार। मेरे सामने डिफिकल्टीज आई, चलो लेट अस कंसिडर इट मे बी चैलेंजिंग, तो करके देखते हैं ना। अलग सी है, ये पहले वाली नहीं यार, वैसे नहीं थी, वैसे वैसे टास्क नहीं आए, वो तो मैं इजी कर लेता था। ये जरा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है इसी में खूबी है ना, खामी नहीं है। मुश्किल हो रहा है ये खूबी है, खामी नहीं है। हाउ यू सी ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। See, God is now here. God is nowhere. It's negative again, है ना। So चलिए, मैंने मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर किया। शायद मैंने बोर भी किया होगा आप लोगों नहीं को। सर, बिल्कुल आप बोर लोग नहीं काफी किया बड़े सर। हो। नहीं 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 सर, नहीं बिल्कुल सर सर, बहुत नहीं सर। भारी, लय भारी लगा, लय भारी। मुझे लगा अच्छा, सर बहुत अच्छा। इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू वेरी मच। एंड आई विश एवरीबडी हेल्दी एंड गुड लाइफ। तो मैं जब भी कभी विश करता हूँ ना किसी को, तो मैं सोचता हूँ, पहले लिखता हूँ द एग्जिस्टेंस ब्लेस हिम विद हैप्पीनेस, हेल्थ, ब्लिस, फ्रीडम एंड सक्सेस, देन लास्ट सक्सेस। ओके, पहले चीजें क्या है? हेल्थ, हैप्पीनेस, ब्लिस, फ्रीडम एंड देन लास्टली सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस अब कैसे मेजर करोगे? एवरीबडी डिफर्स इन सक्सेस। उसका जो ये है ना मेजरमेंट, वो अलग है। मेरी एक लकीर है, उसके बाजू दूसरी लकीर है ना, तब मेरी लकीर छोटी या बड़ी बनेगी। मेरे बाजू लकीर ही नहीं है तो क्या है? लकीर अलग है ना, छोटी नहीं है बड़ी भी नहीं है, लकीर अलग है। ठीक है, एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। सर 2 मिनट। हाँ, यस। 62 नंबर। मैम, यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। 62 नंबर, आर यू देयर? यस यस, यस मैम। यू कैन जी मैम। प्रपोज आउट ऑफ थैंक्स। शुभ दोपहर, यूजीसी मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर। आज के इस सत्र के माननीय अतिथि और इस ऑनलाइन 14th फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में सम्मिलित प्राध्यापकगण, आज के इस सत्र के विशेष अवसर पर मैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर शत्रुंजय मृत्युंजय सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल कर Maybe problem हम with लोगों के the network problem. और हम लोगों के इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। सर ने अपने व्याख्यान के माध्यम से एक मनुष्य के समग्र स्वास्थ्य सेवानी और समग्र विकास को बढ़ावा देने में शारीरिक शिक्षा के महत्व को Okay, ma'am, no अपने problem. पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से It's okay, no हम लोगों के problem. बीच दर्शाए। If you start doing सर ने exercises from today, it will be very सर ने अपने मैं व्याख्यान बोलूंगा के वो दौरान बहुत सबसे बताया बड़ा धन्यवाद मुझे मिल गया ऐसे मैं सोचूंगा. Yes, sir. Yes. Thank you very Sure, much. sir. कि Thank you. मानव It was a को nice session विकसित होने and के I wish लिए everybody a good परिवर्तन health and परिवर्तन blissful की life. Thank you प्रक्रिया very की much. पड़ती है। सर ओके सर, ले आपको बारी। थैंक यू कहना अच्छा नहीं वो लगेगा, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अब हम खुद में ही सुधार लाएंगे और वही आपके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। Yes. थैंक Thank यू। you, ma'am. Thank you. Thank you. आपका Grateful to you all. प्रेरणादायक व्याख्यान हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और हमारे Shall I प्रयासों को quit एक now? नई दिशा देगा। आपका बहुत बहुत Yeah. आभार सर। अंत में मैं इस कार्यक्रम के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एस पाठक सर, सह निदेशक डॉक्टर राफिज सर, डॉक्टर गौरव यादव सर का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। रोल नंबर 62। थैंक यू। थैंक यू मैम। मेरा एक क्वेश्चन है मैम आपसे। क्या? जैसे मैं सर मैम अभी आभार ज्ञापन किया, तो कल समरी रीडिंग जो होगा तो फर्स्ट सेशन का मुझे ही करना पड़ेगा या सेकंड का आप करो, फर्स्ट का देखेंगे, या दोनों प्रिपेयर रखो। अभी क्या होता है ना, 4 लोग होते हैं तो चारों में से 2 ही अवेलेबल होते हैं, कभी कभी एक ही अवेलेबल होता है, तो उस हिसाब से मैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। शाम तक आपको पता चलेगा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो। ठीक है? जी जी धन्यवाद मैम। यस। सेकंड लेक्चर 250 को स्टार्ट होगा, तब ज्वाइन होंगे। हाँ, यू कैन लीव नाउ। नहीं, ये कौन सा तरह के ना है?